good idea is 10% inspiration and 90% implementation. A reflection of this is the multifaceted Managing Trustee and Executive President, MIT World Peace University, Rahul Karad. Rahul Karad, a motivation for the youth, a perspective for the commoners, a guide for the dreamers. He has been a pioneer in many of the initiatives conducted by MIT WPU. Rahul Karad is a man with excellent vision and clear thought process in each and every issue, may it be student politics, justice, democracy, or history. A Harvard alumnus, he started his journey as Executive Director of MIT, Pune, in 2001. He single-mindedly focused on advancing the inherited vision and mission of his academician father, revered Professor Dr. Vishwanath Karad, founder of the Myers MIT Group of institutions, who initiated the new wave of education in engineering in the private sector through Myers MIT Pune, Bharat. Not only that, but he has also built the biggest dome in the world at Loni, Maharashtra, to spread the message of peace and unity. Rahul Karad has carried forward such a great legacy, which resulted in successful expansion of MIT Pune, Bharat. I look at you as a leader in your own area. Please influence those number of other guys who have that sense of belongingness for the country, the Mother India. Rahul Karad is known for his very deep-rooted patriotism and was always inspired by the famous quote of Gandhiji, "Be the change you wish to see in the world." Why no educated Indian parent ever dreams of their children pursuing politics and public life as a serious career option? Rahul Karad, the founder and executive president of MIT School of Government, Pune, gave the seed thought of this unique vision. And MIT SOG became the first institution of political education and leadership in India. Haryana, Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Goa. In this regard, MIT WPU is actively organizing various social initiatives to impact society by germinating the seed thought for social responsibilities within students, women, teachers, political and administrative leaders to the issues relevant to the world. Rahul Karad is the face of New Bharat, the young Bharat. Please welcome with a big round of applause, my friends, the person who created this movement, Sri Rahul V. Karad. Thank you. Thank you, Professor Bapat. I think in last 12 years, I never allowed to show any kind of film. Of course, there was nothing significant to show, but my team insisted. So 12 saal baad, pehli baar ye, whatever little we could do with the blessings of our founder, Dr. Karad, that film was shown here. Thank you so much, Professor Bapat. Janani Janmabhumischa Swargadapi Gariyasi. On behalf of the bodies of trustees, our beloved founder of this education institution, MIT Group of Institutions, MIT World Peace University, the man who created the world biggest dome for the world peace. ये स्टेज के ऊपर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है. Please, on behalf of him, and also from the day one, the man who guided the mission of MIT School of Government and Bharatiya Chhatra Sansad, Shri T.N. Seshan ji, the former Chief Election Commissioner of India, Dr. Raghunath Mashelkar ji, the current chairman of Bharatiya Chhatra Sansad, Indian Students' Parliament, the greatest scientist of our country. On behalf of him and all other governing body members, and of course I remember my mother, and with my own emotions, let me welcome the Honorable Minister, Shri S.P. Singh Baghel Sahab, Honorable Minister for State, Law and Justice, Government of India. Thank you so much for your participation, Honorable Minister, today for this 12th edition of Bharatiya Chhatra Sansad. मैं आज के इस 12वीं एडिशन में बाकी भी अपने जो महत्वपूर्ण गेस्ट यहाँ पे आए उनका भी यहाँ पे मैं स्वागत करना चाहूँगा. हमारे बीच में डॉक्टर पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी जी,
जो कि एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट और पूरा जीवन जिन्होंने एनवायरनमेंट के लिए खपा दिया और उत्तराखंड में पूरे भारत में एनवायरनमेंट के प्रति, अपने नदियों के प्रति अवेयरनेस करने के लिए पूरा जीवन जिन्होंने काम में लाया, मैं उनका भी यहाँ मन से स्वागत करता हूँ। अनिल जोशी जी, आप लोगों को नमस्कार ऑलरेडी किया है, बट यू आर अ ग्रेट पर्सन। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर योर पार्टिसिपेशन। I also wish to welcome Mr. Singhania. We all know that the Singhania family contribution for the country last over 100 years. This is the 5th generation. The JK Tires का नाम आपने सुना होगा, बाकी टेक्सटाइल बिजनेस में, बाकी काफ़ी सारे बिजनेसेस में. So he is the 5th generation, very young and very humble, a billionaire, millionaire, whatever the wealth creation. And of course the education institutions here, you are going to be the tomorrow the input for all the industries. The output of this institution is input of all the industries of the country. And you are here, Mr. Singhania. I am very, very grateful. Your family, yourself, you have given a great inspiration to many generations, I must say, to come forward in the arena of industry. And the philanthropic work, the education work, what your family has done, I really want to welcome you from my bottom of heart and from all the committee members. I also wish to welcome one of the leading scientists of our country, the former chairman of ISRO, whom we have just now given a big clap, and whose tears, Dr. Shiva, we have seen his tears when the Honorable Prime Minister hugged him. And he has become a great icon of this country. The youngsters who want to become the tomorrow's great scientists, the innovators, the researchers. And I was just sharing a little my mind on those ideas of how we can really take this to the bigger canvas, and not that everybody can become Mr. Shiva, but definitely we can keep the hope that looking at him, many such young scientists can come up in the country's future. Thank you, Dr. Shiva, for your participation today. हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर चिटनिस यहाँ पे बैठे हैं, हमारे छात्र भी यहाँ दोनों बैठे, मैं सबका स्वागत करता हूँ। आप दोनों हाथ आपके ये करके, यहाँ नंदिता जामावाल यहाँ पे बैठी है, मैं उनको और धीरेन्द्र सिंह दोनों का भी यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ। पंडित वसंतराव गाडगिल जी वहाँ पे है, ग्रेट 95 उम्र है। और ये भारतीय छात्र संसद जब मैं कंसीव कर रहा था आइडिया, तो ये जो छात्र शब्द जो है, छात्र संसद, तो इसके ऊपर हमारा डेलिब्रेशन हुआ था। तो ही इज़ अ मैन, पंडित वसंतराव गाडगिल जी, ग्रेट स्कॉलर, एंड ही वॉज इन पाकिस्तान दैट टाइम व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, and many stories are there. He has seen the country's very transformation. Thank you, Vasantrao Gadgil ji. Professor Girisan, the director of MIT School of Government, and all other respected members. And last but not the least, I said about Madam Kaushiki Chakraborty. संगीत एक ऐसा एरिया है जिसके माध्यम से जहाँ पे जात, धर्म, पंथ, किसी भी कोई भी बात, स्पोर्ट्स और संगीत, ये बहुत सुंदर ऐसे एरिया है। तो आपको सबको पता है कि लता दीदी का गाना ए मेरे वतन के लोगों, स्वतंत्रता से पहले, उसके बाद, और ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है संगीत एक बहुत बड़ी ताकत है। तो मैंने कौशिकी जी को बहुत पहले, जाकिर हुसैन जी को भी मैंने विनती किया था आने के लिए, वो भी यहाँ आए। उसके बाद बाकी भी काफ़ी सारे संगीत के क्षेत्र के लोग आए, और मैंने और माय फ्रेंड मिस्टर सुरेंद्र मोहिते, वी कुड कन्विंस कौशिकी जी कि भाई ये प्लेटफॉर्म जो है ये युवकों को मैसेज देने के लिए है। कई बार राजनीति के बारे में जो दुराग्रह है हमारे सबके मन में, देयर इज़ वन एवर्स फीलिंग कि राजनेता सब ये गलत लोग हैं, चोर है, पॉलिटिकल पार्टियाँ भ्रष्ट है, और वी सो कॉल्ड क्वालिफाइड पीपल, कॉम्पिटेंट पीपल, हमारी सबके मन की भावना हमेशा इस तरीके से होती है कि राजनीति के प्रति। तो मैंने कौशिकी जी को बोला कि आपका यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है, ताकि बिकॉज वी ऑल आर अल्टीमेटली गवर्न्ड बाय द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज एपेक्स। हर घर में 10 लोगों की फैमिली, 5 लोगों की फैमिली, तो पॉलिटिक्स क्या है। तो मैं आप सब यहाँ पे बाहर के भी बहुत सारा नंबर रजिस्टर किया हुआ है, पूरे भारत के 25 राज्यों से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, और हमारे भी कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसमें भाग लिया हुआ है।
मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा, 5 या 10 लोगों की परिवार में भी पॉलिटिक्स की जब बात होती, पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ बैड वर्ड। तो ये बताने की कोशिश पिछले 17-18 साल से भारतीय छात्र संसद MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से हम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स के माध्यम से हमारा डिसीजन मेकिंग फास्टर होता है। पॉलिटिक्स अगर हमें समझ में आता है तो पॉलिटिक्स इज अ डिसीजन मेकिंग। हर घर परिवार की भी वीक में 10 डेज में कोई मीटिंग होती है तो हम साथ में आके क्या क्या होना चाहिए घर में एक कलेक्टिव तरीके से, ताकि हमें कंफर्ट हो और हमें एक ऑर्डर में हमारी लाइफ हम जी सके। इसके लिए पॉलिटिक्स ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ दैट वी शुड नॉट फॉरगेट। बट राजनीति के प्रति हमारे सबके मन में बहुत दुराग्रह है और इसी बात को एक पॉजिटिव तरीके से समाज के सामने रखने के लिए हमने 2005 में कि भाई इट इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ इंडिया टू डेवलप द फ्यूचर पॉलिटिशियंस, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, और उसके माध्यम से भारतीय छात्र संसद का निर्माण, नेशनल वुमेन पार्लियामेंट का निर्माण। और मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ कि हाउ डू वी कनेक्ट ऑल आवर डिग्री प्रोग्राम विद द सोसाइटी, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो। और एंड अपने भारत का एक बहुत यूनिक आइडेंटिटी है और जो इवोल्यूशन है स्वतंत्रता के बाद का और उसके पहले का भी हमारी पूरी अगर बैकग्राउंड हम जब देखते हैं तो वी डू नॉट हैव टू कॉपी द वेस्ट ऑल द टाइम, यूनाइटेड स्टेट्स और सम अदर कंट्रीज। सो वी हैव वेरी यूनिक मॉडल माय डियर फ्रेंड्स। विद दैट पर्पज MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं भारत के सभी, बाघेल साहब, मैंने भारत में लोकसभा की लाइब्रेरी आपकी बहुत अच्छी है, बट आपने भारत की विधानसभाओं की लाइब्रेरीज और एजुकेशन सेंटर्स कहाँ पे है? पूना की महानगर पालिका है, जिला परिषदें है, पंचायत के सेंटर्स है। 30 लाख से ऊपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे भारत में, 30 लाख से ऊपर दोस्तों। और हमारे लोकतंत्र में अगर आपके जैसे इंजीनियर्स, आज इंजीनियर्स डे भी है, इंजीनियर्स डे की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बाघेल सर, आप यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम इस तरीके से पूरे विधानसभाओं में अगर आने वाले समय में प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ हम सब लोग जानते हैं, बट मैं सॉल्यूशन के तौर के ऊपर आपके सबके सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ कि अपने सभी विधानसभाओं में, जिला परिषदों में, अपनी बाकी भी इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके के गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, लीडरशिप और लाइब्रेरी के सेंटर्स, नॉलेज के सेंटर्स तैयार होने चाहिए। महाराष्ट्र के अपनी विधानसभा में मैं बीच में गया था, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। केरला का काम थोड़ा सा अच्छा है, कर्नाटका का भी मैंने विधानसभा का काम वहाँ पे देखा है कैसे फंक्शन होता है, बिकॉज काफ़ी विधानसभाओं के साथ काम करने का हमारा मौका पिछले MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और भारतीय छात्र संसद के माध्यम से आया। और आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपने सबने इस विषय में रुचि लेनी चाहिए। हमें एक्टिव सिटीजनशिप देश में बहुत ज़रूरी है। वी कांट ऑल द टाइम गो अवे एंड से कि ये हमारा काम नहीं है। हम चाय पीते पीते क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट लोग, टेक्नोक्रेट, साइंटिस्ट, बाकी सभी फील्ड के लोग, हम इस तरीके का जब भाष्य करते हैं कि भाई ये सब वहाँ पे बुरा हो रहा है और हम दूर से देखते रहे, तो आपको तय करना है कि वेदर डू यू वांट टू गेट रूल्ड बाय गुड पीपल और डू यू वांट टू गेट रूल्ड बाय बैड पीपल। ये आपके हाथ में है। हम कितने % लोग भारत में वोट करते हैं, तो ये सब चीज़ें अवेयर करने के लिए आप सब लोगों के सामने हमने ये भारतीय छात्र संसद, ताकि कल जाके आप जब इस संस्था से ग्रेजुएट होकर पास आउट होंगे तो एक कंप्लीट ग्रेजुएट, एक होलिस्टिक ग्रेजुएट, जो सही मायने में परिपूर्ण ऐसा ग्रेजुएट इस संस्था से बाहर निकले, ये हमारी एम्बिशन है। और जैसे कि आप जानते हैं सब लोग कि राजनीति के सबसे ज़्यादा, मतलब लोकतंत्र में हमारे सबसे 4 शत्रु कौन है? करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। हम एक तरफ बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं और एक तरफ ये सब भूत धर्म का, जाति का, ये भी हमारे सबके युवकों के भी मन में हमें कभी पता नहीं था, बट काफ़ी सारी चीज़ें बिना बात की ये सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से हमारे सबके मन में एक दूसरे के प्रति कुछ दुराग्रह निर्माण हो जाता है। तो मैं बाघेल सर, मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी लिखी, बाकी सभी भारत के विधानसभाओं में भी सभी MLAs को, चीफ मिनिस्टर्स को, सबको मैंने इसके बारे में अवेयर कराने के लिए कि भाई हमें किस तरीके से आने वाले समय में पॉलिटिक्स में अगर कुछ बदलाव लाना है तो किसी भी सेक्टर में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट कोई पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्ष नहीं बना सकते भारत में, कि हम सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये नहीं, हमारे कार्यकर्ता या हमारे जो ऑफिस बेयरर्स है ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये बड़ी सिंपल चीज़ है। इंजीनियरिंग में JEE में कितने मार्क्स चाहिए, नीट में कितने मार्क्स चाहिए, हमारी यहाँ पे बाकी के एग्जाम्स में कितने मार्क्स चाहिए, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है किसी भी शिक्षण संस्था में।
उसी तरीके से राजनीति में अगर आना है, इज इट पॉसिबल एंड द टाइम हैज कम। ऐसा मुझे फर्मली लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्षों ने इकट्ठा आकर अगर प्रण लिया और एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया कि हमारे आने वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो या हमारे पार्टियों के ऑफिस बेरर्स हो, एक इस तरीके का उनका क्राइटेरिया अगर राजनीति में आना है तो ऐसे बहुत छोटे चीज़ों के माध्यम से भी बहुत बड़ा काम हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ कहने की इच्छा है। और मैं ये माध्यम से बार बार कहता आया हूँ, आप सब लोग भी इसके बारे में सोचिए कि पॉलिटिक्स ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अविभाज्य भाग है हमारे लाइफ का। आप किसी कारखानदारिता में, कॉरपोरेट में भी जाएंगे तो वहाँ पे 10 लोगों का ग्रुप आएगा तो पॉलिटिक्स होगा, बट पॉलिटिक्स फॉर ए डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिक्स एक डिसीजन मेकिंग के लिए हमें अनुमति देता है और फास्टर अगर और उसका सही मायने में एक स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है तो हम आसानी से निर्णय लेके बहुत फास्ट पेस में जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 75 साल की आज़ादी बहुत बड़ा पड़ाव, हमने बहुत कुछ हासिल किया, बट काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं और मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस हमें अगर फास्टर तरीके से अगर कवर करने हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन है राजनीति का आध्यात्मिकरण। एजुकेशन में अपने इस तरीके का 11-12 स्कूल एजुकेशन में खाली नागरिक शास्त्र हम 8-9 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो इनफ है। बट द टाइम हैज़ कम कि हमारे हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में लाखों विद्यार्थी पढ़ते, तो हम इसमें ये डॉक्ट्रिन अगर हमने आज अगर ये डाला तो शायद 20-25 साल बाद की जो पीढ़ियाँ बाहर निकलेगी वो एक अलग तरीके से परिपूर्ण ऐसी पीढ़ियाँ बाहर निकलेगी। लास्ट में जाते जाते बघेल साहब, मैंने दूसरी एक बात बोली थी कि इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाए, ये भी एक कैंपेन हमने, कॉलोनियल माइंडसेट ब्रेकिंग। 75 साल बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया, मद्रास का चेन्नई हो गया, कलकत्ता का कोलकाता। तो ये ब्रिटिशर्स ने हमें या उससे पहले भी लोगों ने हमें इस तरीके के नाम दिए और हम मेरा खुद का नाम राहुल मेरे पिताजी ने, माताजी ने दिया। और हर कोई छोटा सा बच्चा भी अपने इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने अस्तित्व के लिए झगड़ता है या और वो उसी अस्तित्व से ही उसकी ऊर्जा तैयार होकर जो भी इनोवेशन आगे चल के एजुकेशन और रिसर्च की जो भी बात आप टेक्नोलॉजी के आने वाले समय में करो, तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में आगे जाता है दोस्तों। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है कि इस बारे में भी सोचिए कि 75 साल की आज़ादी में एक कैंपेन हमने यहाँ किया, सबके सिग्नेचर्स चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को वो सिग्नेचर्स लेके हम भेजना चाहते हैं कि इंडिया ये शब्द प्रयोग ग्रामीण इलाके में भारत हम बोलते हैं, बट डे टू डे में भी शायद 10-20 साल बाद हम भारत अगर बोलेंगे तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा रिसर्च और ज़्यादा डॉक्टर शिवाजी, रिसर्च इनोवेशन भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी से ऊर्जा से तैयार होता है। प्रधानमंत्री जी ने जब आपको हक किया, इमोशंस पैदा हुए, पूरे देश में इमोशंस आ गए कि भाई ये क्या है, एक शास्त्रज्ञ को, ये देश का राजनेता, इतने बड़े एपेक्स हमारे प्रधानमंत्री उनको हक कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है और वो ऊर्जा से आज डॉक्टर शिवाजी के माध्यम से कितना कुछ काम इसरो या बाकी भी सभी समाज में कितना हो रहा है। तो आप सब लोग इस तरीके से पॉलिटिक्स या भारतीय छात्र संसद की तरफ देखिए। 3 दिन में बहुत सारे दोस्त बनाइए, एक दूसरे में मिंगल हो जाइए और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि आप इसको बदलाव लाने में ये जो कैटलिस्ट की तरह भारतीय छात्र संसद रोल प्ले कर सकता है। और लास्ट में इवन मैंने ये भी बात बोला था कि इंडिपेंडेंस डे, मेरा बेल बज गया, मेरा टाइम इज ओवर, तो इंडिपेंडेंस डे का नाम भी बदल के मैंने बोला नेशनल डे बना सकते हैं क्या। मैंने दूसरी बात बोली कि भाई मुझे किसी ने इंडिपेंडेंस दिया, राहुल कराड़ को किसी ने इंडिपेंडेंस दिया, तो उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं गुलामी की बू आती है, तो इसको हम नेशनल डे कह सकते हैं। और तो ऐसे हम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजपथ का नामकरण बदल के कर्तव्य पथ किया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो हमें सबको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा। मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर श्री महाजन जी, चंद्रकांत पाटिल जी एंड श्री महाजन जी, दूसरे हमारे युवा मिनिस्टर, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। पूरे भारत के मंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी इस पर्टिकुलर विषय को सपोर्ट करने के लिए। पिछले 12 सालों में बाकी भी मंत्रियों ने बहुत, राजेश टोपे जी पहले दिन से उन्होंने बहुत यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया, जो पहले शिक्षा मंत्री थे एनसीपी गवर्नमेंट में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि चीफ पेट्रन है इसके, इस पर्टिकुलर भारतीय छात्र संसद के, जब मुख्यमंत्री वो थे तब भी थे और अभी भी वो है। तो मैं उनका भी यहाँ से मन से यहाँ पे ग्रैटिट्यूड व्यक्त करके आप सभी स्टूडेंट्स को अगले 3 दिन में बहुत अलग अलग वक्त आएंगे, इवनिंग में भी इसी तरीके का डेकोरम एंड डिसेंसी आप बनाए रखिए, स्टूडेंट टू स्टूडेंट कनेक्ट और बहुत सारे ऐसे अलग अलग विषय हमारे
टीचर्स ने यहाँ पे कमिटमेंट से आपके लिए डिज़ाइन किया है, सभी डीन डायरेक्टर्स, उनका भी मैं यहाँ पे मन से अभिनंदन करता हूँ कि ये आयोजन आपके सबके कार्य की वजह से सफल होने जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for the words of wisdom, the vision that you have shown, and it is a true reflection that the government of India and the national sentiment reflects your thoughts, sir. The thought that you brought last year, breaking the colonial mindset, which was brought by Sri Rahul V. Karad, the renaming of Rajpath, I think it echoes the thought of Sri Rahul V. Karad of breaking the colonial mindset. Thank you, sir. Thank you very much. And I now request, as per the tradition of the platform of 12th Bharatiya Chhatra Sansad, I request Sri Rahul V. Karad, sir, to kindly felicitate and welcome the dignitaries for this inaugural session. First and foremost, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the chief guest of this session, Honorable Minister of State for Law and Justice, Government of India, Professor S.P. Singh Baghel ji. Please put your hands together and welcome with a big round of applause Honorable Minister for State for Law and Justice, Government of India, Chief Guest of this session, Professor S.P. Singh Baghel ji. Now I request sir to kindly felicitate and welcome the former chairman of Indian Space Research Organization, the special guest of honor of this session, Dr. K. Sivan sir. मिलजुल कर अब काम करेंगे, आओ अब कुछ बात करेंगे. Please welcome with a big round of applause Dr. K. Sivan. जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की. I now request sir to kindly felicitate and welcome the special guest of honor of this session, Padma Bhushan, environmentalist, green activist and founder of HESCO, the guest of honor, Dr. Anil Prakash Joshi ji. Please welcome with a big round of applause, my friends. I now request sir to kindly felicitate and welcome the special guest of honor, CEO of JK Enterprises and Director in JK Organization, the special guest of honor of this session, Shri Anant Singhania ji. I now request sir to kindly felicitate and welcome a person who is blessed with beautiful voice, the noted classical vocalist, the special guest of honor, Madam Kaushiki Chakraborty. Please give a big round of applause for all the dignitaries on the dais. Thank you very much. And now it's indeed my honor and privilege, the person whom you're responding to with a huge round of applause and loud noise. But before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Dr. K. Sivan. Shri Kailas Vadivu Sivan has held positions as the chairman of the Indian Space Research Organization and the Secretary of the Department of Space. He has previously served as the Director of the Vikram Sarabhai Space Center. Dr. Sivan is his family's first graduate. In 1980, he earned his bachelor's in Aeronautical Engineering from Madras Institute of Technology. In 1982, he graduated from the Indian Institute of Science in Bangalore with a master's degree in Aeronautical Engineering
and he immediately began working with ISRO. In January 2018, Dr. Sivan was named the chief of the Indian Space Research Organization. Under his stewardship, ISRO launched Chandrayaan-2, the nation's second expedition to the moon. We warmly welcome Dr. Kailas Vadivu Sivan. Please put your hands together and welcome with a huge round of applause, Dr. K. Sivan. Good morning to all of you. In fact, it's a confusion. It's very morning or afternoon. It's exactly 12 o'clock. But I'm keeping it this one and make it good morning. It's 12 o'clock. Most respected Reverend Professor Dr. Vishwanath K. Karat, Honorable Minister of State for Law and Justice, Professor S.P. Singh Baghel, Sri Rahul Karat, Dr. Chitnis, Sri Anant Singhania, Dr. Anil Prakash Joshi, Dr. Srimati Chakraborty, Sri Vijay Kumar Sinha, all dignitaries on the dais, and dignitaries in front of the dais. I know one dignitary, that is Karthikeyan sir, and other the dignitaries in front of them. And most importantly, my dear young friends, it's a very pleasure for me to be part of this session. We always have worked with technical information, scientific this one, but it's a different experience for me after I came here. In fact, I am glad to be part of Bharatiya Chhatra Sansad and congratulate the largest classroom of India, incepted by Mr. Rahul Karat in 2011 to initiate the spirit of public leadership among youths of today and also to inculcate right values in them. The student leaders from all ideologies assemble and contribute to this exclusive conclave to voice their opinion so that healthy democracies evolve. Mr. Rahul Karat has also set up a unique institution, the MIT School of Government, as one of its kind in India and Asia in 2005 to offer training to educated youth who are desirous to make career in politics. I am pleased to know that the educational institutions like MIT have come forward to take the mission of putting educated youth in the forefront of active politics and create a system which will produce competent public leaders and policy makers from the grassroots and all walks of life. My compliments and congratulations to MIT School of Government for doing exceptional service. In fact, when somebody is asking what you are going to do, many people tell, I want to become engineer, I want to become Abdul Kalam, I want to become Einstein, like this. Very, very few people only will tell that I want to become a political leader. And having a university for politics,
It's a really wonderful idea. It is, in fact, it is essential to shape the young minds in the politics in the initial days itself so that they can do better in later year. So the initiative taken by Professor Vishwanath Karat and Rahul Karat really appreciate you. It's a really fantastic idea, I would say. Let me congratulate and compliment them once again. When we are talking about the services, I would say we always in India, we are thinking about the service not just like that. It is for the national benefit. In fact, I am going to talk about one such service, initiated some 60 years back, when the space technology was utilized mainly for distracting others and show empowerment over others. One person from India, innovative way he was thinking, how to make use of this destructive technology in a constructive way. And he thought that India is the right place to implement the space technology for societal applications. What he did was, India is a vast country and 75% of the people are staying in the rural area. For India to develop, the advanced technologies have to reach the rural area. And Professor Sarafai was thinking space technologies as a tool we can use effectively for taking the advanced technology to the rural area. Only thing is, how to do it? The technology is not with us, it's with outside country. Before that, I wanted to ask you, the space technology, do you know where it is started? How many of the students who are knowing where this is the space technology started? In fact, space technology started 250 years back in India itself. India was the first country to make use of rocket for working against a British army. This technology was taken to Germany, England. From England it has gone to Germany. From Germany it has gone to USA. From there it has gone to USSR. Finally, very interestingly, we are going and buying the technology from them. Our own technology we are given to them and we are buying from them with a cost. This is a very interesting feature. Okay. Now, once that the technology is required for benefiting the India, how to do it? It is available in the elsewhere. If we are taking the technology from there, it is very, very costly. It is impossible. In order to provide the service effectively, in a cost-effective way, uninterrupted way, he thought this technology to be generated indigenously, self-sufficient. Whatever our Honorable PM is talking about, Atmanirbhar Bharat, self-sufficiency. This was implemented in 60 years back in one area, the space technology area. And I am very happy that such type of efforts are being for the other area also to make the India to self-sufficient. It's a great effort government of India has taken. Now, based on the effort done by this Vikrant Sarabhai, we have developed indigenously all the technologies required for satellite, all the technologies required for rocket and data dissemination. Now, one area India is self-sufficient is space technology. In fact,
for applications of the space technology for the benefits of the common man, India is number one. That is another point. This also we have to understand. Now, how the space technology is used. In fact, when I became chairman of ISRO, one day during my son's the wedding, engagement day, when I was sitting on the stage like this, one old person was scratching my back. He asked, "Who are you?" I told, "I am the boy's father." After 5 minutes, he again scratched. "What you are doing?" I told, "ISRO, chairman." Again, he was not convinced. He asked, what ISRO is doing? Very interestingly, my own village person doesn't know what ISRO is doing. ISRO is actually not doing rocket. Its aim is not for Chandrayaan 2. Its aim is not for mom. The ISRO's aim is to do the services or benefits of the space technology to bring it to common man. That's what it is doing. And what is the technology, I will tell you. Sometime back, that is whenever cyclone is hitting that east coast area, we used to see from that newspaper 22,000 people killed, 40,000 people killed. Now, based on the satellite images, we are able to predict the whole thing in advance, and the government is taking advanced action so that now the casualty is only 5 people or 6 people. You understand the advantage. And another one is, when we talk about the fishermen, when they are going to the sea, they are not able to find where the fish are available. Now, ISRO has developed an app. This app is just to keep on the pocket. The fisherman doesn't require to know the English. It will show the arrow from where you go. And by following that one, these people will be going and buying, taking so much fishes. That is, when they are returning, their boat is full of fish only. But they are not reducing the cost. That is a different aspect. Still they are maintaining the cost, but they are getting more yield. This is the type of thing. And what I would say is, at present, every minute, every second life of the common man is one way or linked with the space activity. Suppose satellite is not functioning, your broadband connectivity is not there, you cannot see the game, you cannot have the phone, you cannot see internet. The satellite is not functioning, you cannot go to the ATM for taking money like this. So, at present, the entire the community, the citizen is one way or linked with the space technology. It is not only space technology. Our Honorable Prime Minister has taken initiative in 2015 itself, how to make use of this space technology for the governance, mainly for making more and more government schemes. This space technology is being introduced by our Honorable Prime Minister. So that way, the space technology is good for a thing. Now, what is else? Is it sufficient? Definitely, our Honorable PM is always thinking in ahead. If we are going with this mode of working, definitely it is not sufficient to catch the economy. The world space economy, India's contribution is just 2%. Is it sufficient? How to make it bigger? So we have to expand that activities of space activities in India. So Honorable PM have a vision of bringing the space sector reform.
by this process, he allowed that private people also to do the space activities, and by doing this one, definitely that is that the people will be enjoying the benefits of the space technology, and they are doing. And when we are doing such type of activity, definitely we will become number one in the global level. And just I wanted to just give some few minutes. I will finish this one because I want to give advice for our friends. I just this advice I will give only in two forms. One form is, in Kerala there was a village. There's a competition that some people have to jump and cross a pond. The pond is full of crocodile. And whoever is crossing the pond, they will get a 10-7 chain. Nobody was willing to cross. And everybody was standing. Suddenly one person jumped inside and he crossed and he won the thing. And everybody was appreciating. He was so great. Finally, that fellow told, "Arada patti agatakalli idinte." He asked, somebody else pushed him inside. Not he jumped. Somebody else pushed him inside. At that time, his wife was leaving from the crowd. His wife only pushed him. This one. So what I am telling is, please, I want to youngsters, please jump into the activity, jump into that task. Without jumping, definitely you will not swim. You take a decision, and the decision can be anything. You need not worry about that one. Any decision is okay. You take and you work on present, with a present mode. Don't bother about what's happened earlier and don't bother about future. With that, definitely you can come in a great way. Let me wish all of you the great days ahead. Thank you once again for the great opportunity. Jai Hind, Jai Bharat. A big round of applause, my friends, for Dr. K. Sivan, sir. Thank you very much, sir, for your words of wisdom. Thank you very much for coming all the way here and sharing your thoughts with the participants of 12th Bharatiya Chhatra Sansad. And yes, my friends, as Honorable Vice Chancellor mentioned in his address, that this platform is by the students for the students. And the reflection of the same is now, I would be inviting the first student leader of 12th Bharatiya Chhatra Sansad to address the gathering. Please welcome Nandita Jamwal. नई सोच ही राजनीति की नई दिशा का निर्धारण करती है और इसी सोच के साथ मैं भारत के उत्तरी राज्य मंदिरों के शहर जम्मू कश्मीर से आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और मुझे गर्व है और ये मेरा स्वप्न है कि मैं इस लोकतंत्र का अहम हिस्सा बनूं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ MIT का, जो मुझे और मेरे जैसे कई युवाओं को मौका देती है बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र एवं डायनेस्टिक लीनिएज के दायरे से आगे बढ़कर इस मंच पर आके अपने विचारों को प्रकट करने का। Near about 50% of Indian population is under 25 years of age. तो क्या ये कहना गलत होगा कि हम युवा युग में जी रहे हैं? लेकिन इसके बावजूद भी देश के युवा को पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से अलग रखा जाता है। A political system is the lifeline of the country. और बात चाहे बदलाव की हो, आगे बढ़ने की हो, महंगाई चढ़ने की हो या फिर रोजगार की हो, देश का युवा न्यू इंडिया का आधार स्तंभ है। Therefore, the young population should head to the place which matters the most, and that is the parliament. भारतीय छात्र सांसद एक ऐसा मंच है जहां हम जैसे युवा जो ना ही केवल बदलाव की आस रखते हैं बल्कि उसका कारण बनना चाहते हैं, ये हम सबको अपने विचार प्रकट करने का सौभाग्य प्रदान करता है। आज हम सब मिलकर यहाँ कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहते हैं जो ना ही केवल राजनीतिक
एवं सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्व रखते हैं। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम सब जानते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, बट वेयर टू ड्रॉ द लाइन। दूसरा, डायनेस्टी, द अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। थर्ड, डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेटोक्रेसी, वेयर डज द एक्चुअल पावर लाइज। फोर्थ, लेस भारत मोर वेस्ट, द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ भारतीय सिनेमा। काफी चर्चित विषय, भारतीय मीडिया, रूल्ड बाय नॉइज और रूल्ड बाय लॉ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इज इट एक्चुअली पॉसिबल इन द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री लाइक इंडिया? अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसी राजनीतिक असफलताएं हैं जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस मंच का जोरदार उपयोग करें और अपनी आवाज को क्लीन पॉलिटिक्स और गुड गवर्नेंस के लिए यूज करें, क्योंकि समय आ चुका है जब हमें मिलकर इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम में लगी दीमक को हटाना होगा और अपने भारत राष्ट्र को और महान बनाना होगा। तो आइए एकजुट होकर संघर्ष करें, क्योंकि मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है, युवाओं के हाथ में देश की तरक्की होती है। जय हिंद, जय भारत। A big round of applause for Nandita Jamwal, all the way from Jammu and Kashmir. I request Shri Rahul Karat sir to kindly felicitate and congratulate Nandita Jamwal. Heartiest congratulations, Nandita. I now request Dhirendra Singh from Punjab to address the gathering. हेलो। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी अति विशिष्ट महनीय लोगों को मेरा आकाश भर प्रणाम। मैं धीरेन्द्र सिंह, भारतीय छात्र संसद पंजाब प्रांत का स्टूडेंट लीडर, यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों का इस दिव्य और भव्य आयोजन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे समक्ष हजारों की तादाद में युवा पीढ़ी उपस्थित है। मैं आप सबसे मुखातिब होते हुए ये कहता हूँ कि युवा कोई उम्र नहीं होती, युवा एक सकारात्मक सोच होती है। युवा मतवाले हाथी की तरह निरंकुश, तूफानी वर्षा की तरह प्लेनकारी प्रबल प्रचंड, बहरबी संगीत की तरह मधुर, उज्जवल प्रभात की शोभा, संध्या की बेला, चंद्रमा की शीतलता, जेठ की तपती दोपहरी का ताप और ज्वालामुखी सी दहकती आग होता है। और उसे अगर एक नकारात्मक दिशा मिल जाए तो वो कभी दिल्ली की सड़कों को टायरों की कालिक से पाट देता है, तो कभी अपनों के लहू से इस देश की सड़कों को लाल कर देता है। परंतु मुझे आज इस 12वीं भारतीय छात्र संसद के मंच से खड़े होकर ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 12 साल से निरंतर चली आ रही ये प्रथा न केवल इस देश के युवाओं को एक सकारात्मक दिशा दे रही है, बल्कि हमें सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक और लोकतांत्रिक रूप से मजबूत और जागरूक कर रही है। भारतीय छात्र संसद हमें जागरूक करने के साथ साथ इस देश के युवाओं को एक नया मुकाम देने का काम कर रही है। भारतीय छात्र संसद का उद्देश्य है कि राजनीति रूढ़िवाद और वंशवाद की परंपरा को तोड़कर वास्तविकता के मनुस्थल में कदम रखते हुए सामर्थ्यवान और योग्य लोगों के हाथों में जाए। इसी का कारण है जो आज भारतीय छात्र संसद से निकलकर हजारों युवा अलग अलग राजनीतिक दलों के अंदर उच्च पदों पर काम कर रहे हैं, उच्च पदों पर उपस्थित हैं और इस समाज के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वहीं अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 11वीं भारतीय छात्र संसद के अंदर बतौर स्टूडेंट स्पीकर बोलने का मौका मिला। फिर वो खबर मेरे शहर में कई अखबारों में फैली और उसके बाद मुझे राजनीति में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा चुनाव प्रचार में बतौर वक्ता के रूप में बुलाया गया और मुझे हिंदुस्तान के अलग अलग मंचों पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। और साथ ही अगर मैं स्टूडेंट लीडर की बात करूं तो बतौर स्टूडेंट लीडर मैंने पंजाब के अंदर BCS के लिए बहुत सारा काम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करी, अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में गया और मुझे आज यहाँ बताते हुए ये खुशी हो रही है कि पंजाब से मैं एक बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को और प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को अपने साथ यहाँ पर भारतीय छात्र संसद में लेकर आया हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है भारतीय छात्र संसद ही पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र इकलौता ऐसा मंच है जो अभिव्यक्ति की आजादी, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा करेगा,
जो लोकतंत्र और निगमतंत्र के बारे में हमें सचेत करेगा, जो भारतीय मीडिया पर प्रहार करते हुए हमें जागरूक करेगा, जो भारतीय सिनेमा की अच्छाई और बुराइयों को सरेआम उजागर करेगा, जो हर राजनीतिक दल के अंदर वंशवाद की पोल खोलेगा, जो इस देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए सम्मान नागरिक संहिता जैसे विचारों पर चर्चा करके उनको हल निकालने की कोशिश करेगा। क्योंकि और अच्छी बात तो यह है कि इन सारे विषयों पर चर्चा इन विषयों में निपुण और प्रसिद्ध लोगों के समक्ष इस मंच के माध्यम से होने वाली है। इसीलिए मैं अंत में आप सबसे जाते जाते ये कहता हूं कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ईमान निकलेगा, दिलों में कुछ बड़ा करने का अरमान निकलेगा, और मेरी पीढ़ी के ये युवा भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। वाह, कांग्रेचुलेशंस धीरेन्द्र सिंह, बहुत बहुत उम्दा विचार और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आपने अपने विचार यहाँ प्रस्तुत किए। Heartiest congratulations. Yes, you saw the energy of the movement of Bharatiya Chhatra Sansad. Once again, a round of applause for Nandita and Dhirendra for putting their thoughts from this stage. And now it's time when I invite the special guest of honor of this session to address the gathering, Padma Bhushan, environmentalist, green activist and founder of HESCO. The special guest of honor, Dr. Anil Prakash Joshi ji. But before I invite him to address the gathering, I request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Shri Joshi ji. Dr. Anil Prakash Joshi is an environmentalist, green activist, and the founder of Himalayan Environmental Studies and Conservation Organization, HESCO, a Dehradun-based voluntary organization. His work majorly includes developing sustainable technologies that are ecology-inclusive economy for ecosystem development. He has coined GEP, Gross Environmental Product, an ecological growth measure parallel to GDP. GEP has been accepted as a growth measure by the state of Uttarakhand on 5th June 2021. Dr. Joshi has launched several social programs based on resource-based rural development, such as Women Technology Park, Technology Intervention for Mountain Ecosystem, Ecological Food Mission in Mountain, and Women's Initiative for Self-Employment, and has been reported to be successful in providing the villages with water mills, composting pits, toilets, plant-based drugs, and herbal pesticides and rainwater harvesting techniques. He was selected as the Man of the Year by Week magazine in 2003. He is a recipient of the Jamnalal Bajaj Award and is an Ashoka Fellow. The Government of India awarded him the 4th highest civilian honor of the Padma Shri in 2006 for his contributions to Indian society. He was also awarded the Padma Bhushan, the 3rd highest civilian award in 2020 for environmental conservation in Uttarakhand. We warmly welcome Dr. Anil Prakash Joshi. Please put your hands together and welcome with a round of applause Padma Bhushan Dr. Anil Prakash Joshi ji. सबसे पहले मैं इस देश की सबसे बड़ी संसद को प्रणाम करता हूं। आप उससे भी बड़ी संसद हैं जो देश चलाती है, क्योंकि आप हमारा भविष्य हैं और इसलिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा बड़ा परिचय, मुझे लगता है कि अगर मुंबई को फिनेंशियल कैपिटल कहा जाता है और दिल्ली को पॉलिटिकल, तो हम हिमालय के लोग हैं, हम इकोलॉजिकल कैपिटल हैं जो आपको हवा, मिट्टी, पानी देती है और जिसके बिना आप जी भी नहीं सकते, ये तो आपको स्वीकारना पड़ेगा। अभी मुझसे पहले हमारे मित्र डॉक्टर सिवन्ना ने आपको चंद्रमा तक पहुंचाया, मैं आपको धरती पे लाना चाहता हूं, क्योंकि आपको शायद पता ही होगा
कि इस दुनिया में अगर हम बहुत तेजी से कुछ खो रहे हैं तो हवा, मिट्टी, जंगल, पानी। जब दुनिया आगे बढ़ रही थी तो 1800 शताब्दी के आसपास एडम स्मिथ एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न इकोनॉमी का फादर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकता है, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस थी, इकोनॉमी का इनसिक्योरिटी थी उस समय। और तब शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जेम्स वॉट का इंजन आया, फिर दूसरा रिवॉल्यूशन आया, हमने हैंडीक्राफ्ट से मशीन क्राफ्ट में चले गए, और फिर तीसरा आया डिजिटल वर्ल्ड हमने बना दिया। और हमने कहा कनेक्टिविटी, शायद डिजिटल वर्ल्ड ही सबसे बड़ी कनेक्टिविटी हो। मेरी दृष्टि में वो कनेक्टिविटी नहीं थी, उसने आपको डिस्कनेक्ट किया अपने घर से, अपने दोस्तों से और अपनी समझ से। मोबाइल जिसने आप सबको अलग किया है, और ये सब कुछ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम पे हुआ। चलता गया भारत 1947 में जब स्वतंत्र हुआ, 75 साल हमको भी हो गए सोचने समझने के। हमने भी बड़ी प्रगति की और हमको धन्य धान्य होना चाहिए इस देश में कि हमने बड़े आयाम तय किए दुनिया में। अब हम भी 5वीं बड़ी ताकत बन चुके हैं और इसके लिए प्रणाम करना चाहिए उन सबको जिन्होंने इस पर एक बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन शायद हम सबको स्वीकारना पड़ेगा वो कौन सा मॉडल था दुनिया का जो हमने भी स्वीकारा, क्योंकि एक बड़ा सवाल, पहले इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी थी, अब इकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी है। आपके हवा, मिट्टी, जंगल, पानी सारे संकट में चले गए और हम सब लोग जीडीपी के मारे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना गया, कितना नीचे, कहाँ चाइना है, कहाँ भारत है, हम इसी के चारों तरफ घूम रहे हैं। हमारी नदियां खत्म हो गई, हमारे हिमालय के ग्लेशियर पिघलने के लिए शुरू हो चुके। नदियां, गंगा, यमुना या तमाम देश की बड़ी नदियां कहीं कगार पे चली गई। हमारी मिट्टी खत्म हो गई और हवा के हालात तो आपको पता है। देश का पार्लियामेंट जहां बैठता है वहां सबसे दमघोटू हवा बन चुकी है, नदी सूख चुकी हैं। ऐसे में सवाल है कि हमारी भाषा क्या होनी चाहिए। हमारे विकास का जो शब्द है वो अधूरा है। इस देश ने कहा था शब्द समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट बड़ा सोलो है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, इसके नाम से हम विकास का बार बार रट लगाते हैं। सत्य तो यह है इस देश की भाषा थी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। इट इज वेरी इंक्लूसिव। हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, गांव को जोड़कर समृद्धि का नारा लगता था। आज देश के गांव खाली हुए और शहर भरते चले गए, न हम उधर के रहे न इधर के रहे। आज हमारे हालात हैं और जिस मॉडल को हमने अपनाया, वेस्टर्न मॉडल, पश्चिमी देश का विकास का नारा, आज उसी यूरोप में 41 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो चुका। बोलिए किसको माने, वहां तड़प गए हैं लोग। 60% यूरोप सूख गया है। बोलिए किसका नारा लगाना है। आपको सोचना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, और राहुल जी का मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं, इस देश को भारत ज्यादा कहो, इंडिया कम, क्योंकि इंडिया में कहीं पश्चिमी झलक है, भारत में इस देश की झलक है। ये समझना होगा। और सत्य ये भी है कि अगर हम ये कल्पना कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बार बार इस देश को दुनिया की चरम में ले जाना चाहते हैं और इस देश को फिर एक बार गुरु का दर्जा देना चाहते हैं। प्रणाम है उनकी इस भावना के लिए। पर सवाल अब ये भी है कि हम आधे अधूरे न रहें। हम इकोलॉजी के साथ, इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी की भी सोचें। हमारी इकोनॉमी, इकोलॉजी इंक्लूसिव होनी चाहिए। मैं बहुत सोचता हूं, मुझे लगता है कि शिक्षा और उद्योग, ये 2 घराने ऐसे हो सकते हैं जो इस बड़े परिवर्तन को ला सकते हैं। वो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट के बारे में भी अगर साथ साथ सोचेंगे तो हम जिस इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं वो सिक्योरिटी होगी। और ये देश जहां हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को देव कहा जाता था,
जहां भगवान विष्णु समुद्र के तले में बैठते थे और भगवान शंकर हिमालय की चोटी में, पवन सुत हनुमान, ये सब हमारे परिचय थे प्रकृति के प्रति। प्रकृति और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, इस देश ने समझाया और बताया है। साहब इसकी समझ अब एक नए सिरे से बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप ये मान के चलिए हम किसी भी बड़े पद में पहुंच जाएं और हवा मिट्टी पानी अगर हमारे बीच में से चला गया तो हम कहां जाएंगे। और इसी भावना से हमने अपने यहाँ ये जीडीपी की रट के अलावा हमने कहा एक जीईपी भी होनी चाहिए, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। ये 4 पिलर हैं जो हमारे जीवन के पिलर हैं। हवा, मिट्टी, पानी और जंगल, इन 4 का भी ब्यौरा दीजिए जब आप जीडीपी की बात कहते हैं। आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कहते हैं तो इकोलॉजिकल ग्रोथ की बात भी करिए। इकोनॉमी और इकोलॉजी एक साथ चलनी चाहिए। हम में से कौन है जिसे हवा नहीं चाहिए? हम में से कौन है जो एक मिट्टी वाला भोजन नहीं करना चाहता, केमिकल का नहीं करना चाहता? कौन है जिसे जंगल नहीं चाहिए? कौन है जिसे पानी नहीं चाहिए? अगर हम सबको ये चाहिए और इनके अलावा अगर जीवन संभव नहीं है तो हमारी शिक्षा का, हमारे उद्योग का हिस्सा ये भी बन जाएंगे तो करेंगे। इसलिए जीईपी भी शायद हमारा एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और मित्रों, मैं और मेरे जैसे कुछ साथी, मैं आपके बीच में इसलिए कह रहा हूं, तुम आने वाला भविष्य हो। मैं और मेरे कुछ साथी गेटवे ऑफ इंडिया से, मुंबई से एक साइकिल यात्रा कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि प्रगति, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई हमारे देश की प्रकृति का द्योतक है और प्रकृति उत्तराखंड, हिमालय जो इकोलॉजी है, इनकी एक साइकिल यात्रा हम कर रहे हैं 7 स्टेट से होकर और सब लोगों के बीच में जाएंगे। मित्रों, ताली से काम नहीं चलेगा, अब ये औपचारिकता बन चुकी है। जुड़िए, ताल पर ताल मिलाइए और उस बात को आगे बढ़ाइए जो इस देश की सबसे बड़ी हमारी अस्मिता है, हमारी प्रकृति। हम दुनिया में प्रकृति के लिए जाने जाते हैं और इसकी समझ बनानी पड़ेगी। हमें आर्थिकी भी चाहिए और प्रकृति भी चाहिए, इकोनॉमी भी चाहिए, इकोलॉजी भी चाहिए। और अब वेस्टर्न वर्ल्ड शायद भारत की तरफ एक नए सिरे से झांकेगा, क्योंकि अगर मूल मंत्र प्रकृति को बचाने का है तो वो इस देश में है। और मित्र, आप आने वाली पीढ़ी हो, आपके हिस्से का हवा, मिट्टी, जंगल, पानी हमने खा दिया, मेरे जैसे उम्र के लोगों ने। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करने आया हूं कि आप प्रकृति को बचाने के लिए भी इतने जोर से जुड़े। ये आपका सवाल है जीवन का। मेरा जीवन मैंने जितना जी लिया उतना आपका बचा है। आप आने वाले समय में इस जीवन के प्रति गंभीर हों और एक साथ जुट करके प्रकृति और प्रभु और प्रगति, इनको एक साथ जोड़ के देखें। प्रभु के साथ प्रकृति और प्रगति जुड़ी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मित्र, यहाँ पे आने का या मुझे एक निमंत्रण जो मिला है उसका कुछ मेरे लिए अर्थ निकलेगा। और मेरा अर्थ का मतलब मेरा नहीं है, वो आप सबका है। हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को लेके इस पर गंभीरता का समय है। और ये बार बार जो घंटी बज रही है, मैं बड़ा सचेत हूँ, मैं अपने समय से पहले इसको समाप्त अवश्य करूँगा, लेकिन मैं एक और घंटी बजाना चाहता हूँ जो प्रकृति बजा रही है। हिमालय के होने वाले तमाम तरह के जो डिजास्टर हैं, आपकी नदी जो मूला मथु नदी है वो अगर बहुत गंदी है तो वो भी घंटी बजा रही है। यह तमाम दुनिया में जितने भी प्रकृति के प्रकोप हमारे बीच में हैं वो भी घंटी बज रही है। इसको न सुने, उसको सुने जो सुनाई नहीं दे रही है, कुछ बता रही है। मेरा प्रार्थना है मित्रों और सभी को शायद सामूहिक रूप से अब प्रकृति को समझने समझाने का है। और वो यात्रा जो हम लोग सबके लिए कर रहे हैं, क्योंकि सारी हवा मैं नहीं पाऊंगा, सारा पानी मैं और मेरे साथी नहीं लेंगे, मिट्टी बचाएंगे तो सबके लिए बचेगी। इसलिए
आपके लिए आवश्यक है कि आप इस ओर भी चिंता करें। और सत्य तो ये है कि पार्लियामेंट का मतलब पॉलिटिक्स से नहीं होता, जो गवर्नेंस है उससे नहीं होता, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट और गवर्नेंस का स्किल है ये स्कैम भी बन जाता है। अब समझ ये होनी चाहिए कि हम आने वाले समय में प्रकृति को साथ जोड़कर बढ़ें और अपनी समझ प्रकृति को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ाएं। आप सब लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें और जिस यात्रा में हम सब लोग निकले हैं उसमें आप कैसे जुड़ाव कर सकते हैं, राहुल जी को हम अवश्य इस बात की सूचना देंगे। आप सबको प्रणाम और धन्यवाद। Thank you very much, Padma Bhushan Dr. Anil Prakash Joshi ji. Thank you very much for your thoughts and your words of wisdom. And now it's time when I request and invite the CEO of JK Enterprises and Director in JK Organization, the special guest of honor of this session, Shri Anant Singhania ji, to kindly address the gathering. But before I invite him, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Shri Anant Singhania ji. Shri Anant Ajaypat Singhania is president of the Indian Merchants Chambers. He is also a fifth-generation industrialist, CEO of Messrs. JK Enterprises. The firm belongs to the illustrious 135-year-old JK organization, which is owned and operated by the Singhania family. Shri Singhania is a director in JK Organization, Platinum Fashion Apparels Private Limited and Subhash Silk Mills Limited. He is also the managing partner of Golden Fibonacci Property Developers Limited Liability Partnership. Shri Singhania is the current president of the 115-year-old IMC Chamber of Commerce and Industry. After being on the managing committee for several years, Shri Singhania is a commerce graduate from Sydenham College, Mumbai. He also did a 2-year course in computer applications and programming. Shri Singhania has been involved in the activities of educational institutions, organizations, and charitable trusts in the JK organization and elsewhere. He was a trustee of the JK Trust, India's largest private NGO in the animal husbandry field, and a trustee in a few other public charitable trusts in the fields of education and medical facilities. Apart from business, Shri Singhania has been a member of the Executive Committee of the Indo-Italian Chambers of Commerce and the Managing Committee of the century-old IMC, Chamber of Commerce and Industry. He is the co-chairman of FICCI, Maharashtra State Council, and an executive committee member of the China-India Forum. We warmly welcome Shri Anant Singhania. Please put your hands together and welcome with a big round of applause the special guest of honor, Shri Anant Singhania. Thank you. Yeah, that's fine. Thank you. A very good morning, Professor S.P. Singh Baghel, Honorable Minister of State for Law and Justice, Government of India, Dr. Sivan, former Chairman ISRO, Professor Dr. Vishwanath V. Karad, founder and chief patron and president of the MIT World Peace University, dignitaries on the dais and off, faculty, students, ladies and gentlemen. It's an absolute pleasure and honor to have been invited by Dr. Karad to share my thoughts with you today at the 12th Bharatiya Chhatra Sansad at this amazing university campus. Let's give a round of applause to the wonderful cultural performance put up by the students of MIT. We had two wonderful student leaders. I can see them moving ahead, and it's just a reflection of what there is in the audience, the future leaders of tomorrow. This platform was created by the leaders of tomorrow, was conceptualized by Mr. Rahul Karad way back in 2011, which has been instrumental in sensitizing the youth of today to take up democratic leadership.
Thousands of selected student leaders eagerly participate in such a unique conclave every year, only because of this sanctity of the thoughts behind such an apolitical platform which talks about strengthening the democracy. The MIT School of Government, started by Mr. Rahul Karad in 2005, happens to be Asia's first school to train and develop future political leaders. It's praiseworthy that the Institute has taken up the mission of ensuring that the educated youth must join active politics. I sincerely hope that this initiative fulfills its objectives and that institutions like the MIT World Peace University continue their dedicated efforts towards nation building. Standing here, addressing you from the Swami Vivekanand Sabha Mandap, named after a distinguished spiritual leader and a social reformer, I recall one of his queries: believe in yourself and the world will be at your feet. I too have a few mantras for the youth who aspire to be a leader. The first step is to work hard. The second is also to work hard. And the third is also to work hard. It always pays. And most important, believe in yourself. You can do it. The way to inspire others is to know what motivates them. What helps is asking, listening, and building trust. Leaders don't choose their followers. Followers choose them. A great leader will take his people along and work towards the development of society and the nation. Leadership plays a key role in sustainable economic growth as it involves providing opportunities for the growth and the progressive development. India is not only the largest democracy, but also houses one of the youngest population in the world. 2/3 of the population is below the age of 35, and India is poised to harness this demographic dividend. The youth is the future of tomorrow and continues to find solutions to every problem that it is poised with. We must focus on our priorities and look about new ways of operating the world. Take the pandemic. The world that we knew over the last couple of decades has dramatically changed over the past 2 years. We have transformed and adapted to the change in a post-pandemic world. One wonders, are we at the end of the pandemic? Or is it the calm before the storm? Conversely, one ponders China's stand on the zero COVID policy, where even today, more than 30 cities, millions of citizens are facing severe lockdown, reminiscent of what we faced a year or two back. Even the Ukraine-Russian crisis is another uncertainty that has greatly impacted the world economy and is causing havoc to economies worldwide. We're seeing UK with 15% inflation. It's rising oil prices. Europe is at a standstill with winter approaching, and it's causing a great impact on the supply side inflation. The IMF has projected the world GDP for this year at 3.2%, which will slide to 2.9% next year. While these projections are gloomy, but India is at a different trajectory. India is one of the fastest growing economies of the world. As our speaker said earlier, we must not only measure our growth by way of GDP, but with the ecology as well. However, India is upstaged UK to now become the 5th largest economy in the world. It always was the 3rd in terms of the purchasing power parity. And the kind of growth we are going to see as we celebrate 75 years of independence is going to be tectonic. It's going to be mind-blowing. We had $3 trillion. This is going to go 10 times in the next 25 years. We will be $30 trillion by the time India turns 100. Can you imagine what kind of opportunities that will have for the world to look upon India?
I feel in what Mr. Rahul Karaj said, you know, Modi ji's vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India. I see a Bharat where the world will become dependent on her. We will soon move from Atmanirbhar Bharat to an India where the world will be Bharat par Nirbhar. India's development, rapid growth, technological marvels, brain power, digital revolution is not going unnoticed. The entire world has descended on us to exploit the huge domestic demand and the land of opportunity. The schemes rolled out by the government has enabled the top Fortune 500 companies to set up their base in India. We have the latest iPhone, the technological marvel being produced in India. We just had recently heard of semiconductors being manufactured at a very large scale in Gujarat. All of this is India's attraction. The digital revolution of mobile, the internet connectivity in each one's hand, the revolution called 5G is going to change everything. It's going to put India back on the digital curve. Can you imagine the kind of speed that you will get delivered, the kind of content that you will get, the kind of security that the 5G revolution will give you? We've already had 105 unicorns come up. The startup ecosystem is there. You are the youth. You are the future. You are going to be a part of this change, the part of this progress. Even world over, Indians are at the helm of Fortune 500 companies, be it Google, be it Twitter, IBM, I mean, just to name a few. Not only that, in the political world, and here as I speak to you at the Indian Student Parliament, did you know that there are over 30 leaders, presidents, prime ministers of Indian origin that have served in various countries? Even today, 5 presidents and 2 prime ministers of Indian origin are currently in office around the world. Students, you should aspire to go out there and spread your wings and make a difference. I thank organizers for playing that small video on me. It was very touching. I have been blessed to be born in the illustrious Singhania JK family, having a heritage of over 135 years of industrial activity, trading, services, and philanthropy. Being a 5th generation family member, I imbibed the value systems that propelled us towards growth. Investing in people, choosing the right technology, and focusing on the growth areas is the key to success. You may not know, but my great-great-grandfather, he started with a very meager way. He used to sell textile, going house to house. From there, we started our pursuit of excellence. We started focusing on one very key factor. That factor was exports. Because we knew in order to be competitive, we needed to be competitive in the international global arena. That taught us 3 things: focus on quality, competitive pricing, and timely delivery. These were the 3 mantras that really helped us as an organization. I must tell you that JK had several firsts. We were the world's first producer of hydrosulfide in soda, the first in India to manufacture TVs, the first to manufacture steel-built radials, and so on and so forth. Today, some of our businesses are world leaders in their respective fields. None of this would have been possible without the inward focus of our core business needs. I will end with something that I saw recently on social media that was really impactful. What is the difference between growth, progress, and success? So the speaker said, if you increase your turnover from 50 crores to 100 crores to 5,000 crores, it's called growth. It's not success. Increasing your materialistic possessions is called growth. But if you add ethics, discipline, and honesty, it's called progress. So growth plus ethics is called progress. Now, what is success?
When you take growth plus ethics plus humanity, morality, and spirituality, that is called success. And we have to move to that higher role. So, students, go live your dreams. The sky is the limit, and I wish you a successful journey. Thank you. Thank you very much, Sri Anant Singhania ji. Thank you very much for your words of wisdom, and thank you very much for giving the mantra for success to all the participants of 12th Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you very much. Next, now it's time when I invite on stage the noted classical vocalist, the special guest of honor of this session, Madam Kaushiki Chakraborty ji. But before I invite her to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Madam Kaushiki Chakraborty. Srimati Kaushiki Chakraborty is a well-known Indian classical singer. She was a student at the Sangeet Research Academy and a representative of the Patiala Gharana. Her repertoire includes semi-classical thumris and khayals. She began studying Indian classical music at the age of 10 at the Jnana Prakash Ghosh Academy, where her father's guru also taught. She later enrolled in the ITC Sangeet Research Academy and earned her degree there in 2004. Her father also provided her with musical training in Kolkata at the Shruti Nandan School of Music. She has developed a specialization in performing khayals and thumri. But since 2002, Vidwan Bal Murli Krishna has also taught her South Indian classical music. Srimati Chakraborty has taken part in numerous important concerts. She occasionally uses modern Indian pop music in her concerts in addition to performing khayals. She began performing at the Dover Lane Music Conference when she was 20 years old and participated every year for the following 5 years. She won the Asia Pacific category of the 2005 BBC Radio 3 Awards for World Music. She also received the Nari Shakti Puraskar in 2020 and also won the 2010 Ustad Bismillah Khan Puraskar for Hindustani vocal music from the Sangeet Natak Academy. We warmly welcome Srimati Kaushiki Chakraborty. Please put your hands together and welcome with a huge round of applause, Madam Kaushiki Chakraborty. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurudeva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Namaskar everyone. Before I even start speaking, I want to thank everyone who made it possible for me to come here and speak to this august gathering of such eminent personalities, such dignitaries present on stage. I thank MIT School, Dr. Kadar and Shri Rahul Kadarji for giving me this opportunity. I'm not a speaker, as you can see, and that's why I started my time with something that I've been doing for a long time. So I've been thinking that why am I coming here? What is my relevance of coming here? I'm neither a political personality, I'm not a leader, I'm neither somebody who heads a company or, holds things together. So the only relevance that I have got, only reason that I might be here, because I'm a student. So
I should be more on your side and not here. But I speak for you. I speak for a student. I speak for someone who has been trying to learn a traditional form of art and have been trying to serve it with all my honesty, commitment, devotion, and truth. I'm a student of philosophy, but before I get to that, the Bharatiya Chhatra Sansad, I have been told as a child that Chhatra is the one who holds the Chhatra, which means someone who holds the shade on top of the Guru's head. So the concept of leadership is so much about the student, about the legacy, about the tradition going forward and taking it forward. The responsibility lies on your shoulders, the able shoulders and the strong shoulders, that the future generation, the students who are sitting here, it is with you. As a student of philosophy, I read this line from the great philosopher Descartes, I think, therefore I am. But for me, it's slightly different. I sing, therefore I am. So let's talk about what music makes me. Because I sing, therefore I am. Now, who am I? I'm a very true Indian. I'm a true Indian, and in this platform, starting from this platform, I promise, Rahulji, I'm an Indian, but going forward, I'm a Bharatiya. So being the Bharatiya that I am, what did I learn from music that makes me a true Bharatiya? It made me respectful towards my tradition. The concept of leadership, I think, is best conveyed with the concept of a guru. A guru, the word itself says, the first part of the word says darkness, and the second part of the word means light. So someone who brings you from the darkness of ignorance to the light of knowledge is a guru. And if this is not a leader, then who is? And there's a Sanskrit shlok that I learned as a student of music. Ajnanatimirandhasya jnananjanashalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namah. This is what music teaches me. Also, it teaches me to be secular, to be respectful to different caste and creed and religion and different shapes and sizes and colors of God that we worship and we bow our heads. Because in the same discipline of music, I learned Devi Durge Sanatani Mata Palika Sab Bhakatan Ki Devi Durge. Also, the next morning I would learn a different composition, which is Allahu Allah Jal Shan Maula Tero Naam Liye Mere Hove Tasalla. So this was not a part of a secular training system, education system. All these were learned through the discipline of learning music. So, and also, Dr. Anil Joshi ji was talking about environment. I realized how important it is. But as a part of music, I learned a composition, Agh Bhoom Akash Pavan Pani Balihari Teri Meherbani Agh Bhoom Akash Pavan Pani, which talks about the 5 elements of nature and how it is held together with the absolute, with the concept of absolute that we worship. It doesn't have to be a God with 4 heads or 3 hands or sitting or standing. It just has to be a concept of absolute. Now, coming to the concept of absolute, the training of spirituality, the understanding of spirituality in my life happened through music. When I learned Na punnam na papam na sokyam na dukkham na mantro na tirtham na vedah
न यज्ञम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपम अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम. So this was my training of spirituality, of the nature of my existence, of the nature of my soul, something that's beyond the gender, the caste, the creed, the religion. Now coming to a place like this, I also once again understand how powerful music is, because the anthem of Chhatra Sansad is a song. I mean, I don't want to mention every specific song that we hear, for a detergent powder, to a clothing line, to a car. So every song is power. Every tune has its own power. And the power that communicates, that binds us together, that holds us together, that brings us together. A national anthem could have been just a poetry, but we needed a song. Not in this country. Every country needs a song. Every country needs a song that's their national anthem. Every country needed a tune that brings everyone together. Not every one of us have to be a singer, but we have to come together under the tune of that anthem. But it pains me, because I'm in a leadership forum, and I think as a student, as I started my speech with, as a student, I have a few requests, I have a few plea to the future leaders and the existing leaders of our country. This power that music is, when I see that it's an extracurricular activity in the schools, when I still see people calling a tanpura sometimes a sitar, when I hear people calling a swarmandal a santur, or not being able to differentiate between a surbahar and a veena, it really pains me. Because in a country where creative art, where culture, where poetry, theater, literature, music, painting, sculpture, where these things define us, where it says who we are, where it lets us, it kind of allows us to meet ourselves. In this country, music is still an extracurricular activity, and we are still considering, as a part of the government, whether to bring music to be a part and parcel of our primary education system, like the Western world. But my question is, like the Western world, we don't have to bring music. Like our own ethos, like our own history, like our own, tradition, we have to continue to make music a part and parcel of everybody's everyday life, not to make them musicians, but to make them more holistically educated human beings that makes a more healthy society. Because we all are talking about the combination of EQ and IQ. I do not know personally, maybe I'm biased, and allow me my bias as a musician. Maybe I'm slightly biased, but I don't know of any other way to bring that balance into our lives, if not bringing creative art into making it a part and parcel of our education system. And I think it is already very, very, very late, but there's never a late when we make a decision and we promise to kind of carry it forward. And as I said that, I sing therefore I am, it taught me discipline, it taught me tradition, it taught me perseverance, it taught me the importance of a guru, it taught me the importance of leadership, it taught me that a leader is that person who promises to continue his learning process, a person who continues to grow, and a person who commits to take the society by and large and continue that education, continue that understanding and learning process together, and make the I in a bigger and a bigger and a bigger we. So the hashtag for this conference is Future Hamara Hai. Definitely Hamara Hai, but I remember a dialogue from the movie Spider-Man: with great power comes great responsibility. So the responsibility along with the power is yours. And as a student of music, I will wait for this power, for this governance, for politics, to decide, thinking the holistic development of the society,
considering how we can make this society. We're talking about how we are a very, very young country. Yes, we are a very young country, but the rate of teenage and youngster depression is also growing as much. And I think creative arts and culture and valuing the tradition, valuing where we come from, will take away that depression and will make us more grateful. And there's no better way towards a happier life if it's not a very grateful life. Thank you so much. Namaskar. मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए. Thank you so much. What a beautiful voice. A big round of applause, my friends. Thank you very much, Madam Kaushiki Chakraborty ji. Thank you very much for your words and, of course, the beautiful voice. Thank you. My friends, now it's time in the session when I invite the chief guest of this session, Honorable Minister of State for Law and Justice, Government of India, the chief guest, Professor Sri S.P. Singh Baghel ji. But before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Shri S.P. Singh Baghel ji. Shri Satyapal Singh Baghel, a member of the Bharatiya Janata Party, is presently a Minister of State in the Ministry of Law and Justice in the second run of the Narendra Modi government. He was elected to the 17th Lok Sabha from Agra constituency. He started his career as a sub-inspector in Uttar Pradesh Police and left the service as Senior Intelligence Officer to pursue his career as Assistant Professor, Military Science in Agra College, Agra. In 1998, 1999 and 2004, Shri Baghel represented the Samajwadi Party 3 times in the Lok Sabha from Jalesar, Uttar Pradesh. In 1998 and 1999, Shri Baghel was a member of committees on subordinate legislation, human resource development and health and family welfare. In 1999 and 2000, he was a member of committees on food, civil supplies and public distribution and an estimates committee. Between 2000 and 2004, he worked in the Ministry of Home Affairs and on committees of public undertaking, external affairs and member attendance in the House. In 2014, he was elected to the upper house of Parliament, the Rajya Sabha. In 2017, Shri Baghel became a member of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh, representing the Bharatiya Janata Party. In 2019, he was elected to the Lok Sabha from Agra constituency, following his clean and prolific track record in the state. We warmly welcome Shri Satyapal Singh Baghel. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, the chief guest of this session, Professor Satyapal Singh Baghel ji. देश के बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय MIT यूनिवर्सिटी में आयोजित 3 दिवसीय छात्र संसद के इस समारोह में पधारे इस विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब, जिन्होंने अभी गए हैं लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान में जिनका बड़ा योगदान रहा है अंतरिक्ष अभियानों में, ऐसे हमारे के शिवान साहब, पूर्व चेयरमैन इसरो। भारत के विकास में जिन उद्योगपतियों का बड़ा योगदान रहा है उसमें से एक परिवार अनंत सिंघानिया जी, वाटर हार्वेस्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ग्रीन गैसेस, पानी, जल, जमीन, जंगल, इसके लिए अपना जीवन देने वाले अनिल प्रकाश जोशी जी, भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म, लोक संगीत, लोक नृत्य को अक्षुण्ण रखने वाली और बढ़ाने वाली कौशिकी चक्रवर्ती जी,
श्री राहुल कराड़ जी, प्रकाश वी जोशी साहब, शरद चंद बराड़े साहब, बसंत राव गाडगिल जी, डॉक्टर R.M. चिटनिस वाइस चांसलर साहब, इस विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापकाएं, छात्र छात्राएं, देश भर से आए हुए छात्र संसद में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सारे पत्रकार बंधु, 1983 में प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ साहब ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज 5 राज्यों में कई हजारों छात्रों को शिक्षित और प्रशिक्षित कर रहे हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो प्रोफेसर अच्छे सपनों के लेके विश्वनाथ कराड़ साहब और महाराष्ट्र से शुरुआत होनी भी चाहिए। ये वीरों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है, संत पैगंबरों की भूमि है, फकीरों की भूमि है। शिक्षा के अग्रदूत, आपको पता ही, यहाँ से ही ज्योतिबा फुले साहब, प्रथम महिला शिक्षक सावित्री फुले साहब, सामाजिक न्याय देने वाले साहू जी महाराज और आरक्षण देने वाले, औरंगजेब के 25 साल दक्षिण में जाया करने वाले शिवाजी साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राज्य, जिन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया, जो डायनामाइट के फार्मूले से भी ज़्यादा मजबूत है। अपने ऐसे पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने में MIT का बड़ा योगदान है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। 3 दिन आपकी ये छात्र संसद चलेगी। विभिन्न विषयों पर चर्चा परिचर्चा होगी। उसमें आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, चाहे 0 आवर हो, 377 में हो, शॉर्ट नोटिस हो, एडजमेंट मोशन हो, कॉलिंग अटेंशन हो, नो कॉन्फिडेंस हो, कोरम पर बात होगी, प्राइवेट मेंबर बिल हो, आप इस पर चर्चा जरूर करेंगे और भारत की संसद को चलने वाली नियमों को जानेंगे। इस 3 दिन के इस छात्र संसद के इस वैचारिक मंथन में जरूर कोई ना कोई अमृत निकलेगा जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, कार्यपालिका को मजबूत करेगा, विधायकों को मजबूत करेगा, न्यायपालिका को मजबूत करेगा और मीडिया को मजबूत करेगा। हमारी डेमोक्रेसी इन्हीं 4 खम्भों पर टिकी हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि MIT केवल IAS, IPS, IFS, IRS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट ही नहीं बनाती है, बल्कि 12वीं छात्र संसद करके ये छात्रों में नेतृत्व की भावना भी पैदा करती है और भविष्य की लीडरशिप भी पैदा करती है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आएंगे, अवार्ड भी पाएंगे। मुझे लगता है जीतना इतना जरूरी नहीं है जितना प्रतिभाग करना जरूरी होता है। जो जीतेंगे अग्रिम रूप से, चूंकि ये इनॉग्रेशन सेशन है, मैं तीसरे दिन आता तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आता। उनको एडवांस में बधाई देना चाहूँगा। और इस अवार्ड का मतलब केवल एक शॉल, दुपट्टा, श्रीफल, ट्रॉफी नहीं होती है।
ये जीवन में परिवर्तन लाती है, ये कैटलिस्ट का काम करती है, ये उत्प्रेरक का काम करती है, ये प्रेरणा देती है। जब भी ऐसी किसी छात्र संसद में जाता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि 9 साल की उम्र में एक अंताक्षरी प्रतियोगिता में मेरे अध्यापक ने मुझे मानस के लगभग हर अक्षर पर कई चौपाइयाँ रटाईं। मैं अपना ब्लॉक जीता, तहसील जीता, जिला जीता और फर्स्ट प्राइज पाया। और उस समय गरीब भारत में प्रथम आने पर मुझे रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी। सच मानो, उस साबुन की छोटी सी टिक्की को लेकर के जब मैं अपने गांव के कुएं पर जाके नहाया, मैं उसकी खुशबू से आज तक महक रहा हूं। मैं उसकी खुशबू से इसलिए महक रहा हूं कि वो इनाम के तौर पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी टिक्की ने 9 साल की उम्र में मेरे पैरों की कपकपाहट को दूर किया, मेरे मंच के फोबिया को दूर किया और मेरे माइक के डर को दूर किया। इसलिए लाल किले से भाषण दूं या वाइस चांसलर्स के बीच में बात करूं या माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच में अपनी बात कहूं या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार के बीच में अपनी बात कहूं, उस साबुन की इनाम की टिक्की की वजह से कभी मेरे पैरों में कपकपाहट नहीं होती है। यह उस इनाम का कमाल है। अध्यापक, यहाँ की फैकल्टीज़ की भी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। अध्यापक राष्ट्र की संपत्ति के चतुर माली होते हैं। संस्कारों की जड़ों को अपने श्रम से सींचकर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि 1983 से लेकर आज तक 40 साल में निश्चित तौर से इस विश्वविद्यालय से महाप्राण शक्तियां बनी होंगी जो देश के काम आएंगी, डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगी। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ने का तरीका क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, छात्र संसद में भाग ले रहे हो, पॉलिटिकल वायरस अगर आपके एक्टिव हो गए तो कभी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भी पहुंच जाएंगे। ये राजनीति वो है, सत्ता वो है जो ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। मायावती जी एक बार 6 महीने सीएम रही, एक बार दोबारा 6 महीने रही, एक बार 1.5 साल रही। मुलायम सिंह 1977 से 80 के बीच में केवल 27 महीने में 2 प्रधानमंत्री मोरारजी भाई और चरण सिंह साहब रहे। 89 से 91 में वीपी सिंह साहब और चंद्रशेखर जी 16 महीने। 96 के 16 महीने में देवगौड़ा और गुजराल साहब। एक बार अटल जी 13 दिन के लिए और एक बार 13 महीने के लिए, फिर एक बार 5 साल के लिए। लेकिन ये जो नीली बत्ती होती है ये 35 साल तक के आसपास, 30 से 35 साल के बीच तक रहती है। और ये लाल बत्ती बड़ी बेवफा है, ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। और अब तो प्रधानमंत्री ने वैसे भी आदेश दे करके हम लोगों से कहा और हम लोगों ने माना है कि अब कोई लाल बत्ती नहीं लगाता है। तो आगे बढ़ने का तरीका क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब इसको ऐसे भी कह सकते थे कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। उन्होंने ये क्रम क्यों रखा? जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक संगठित हो ही नहीं सकता, और जब तक संगठित नहीं होगा संघर्ष के रास्ते पर नहीं चलेगा। इस विश्वविद्यालय के बच्चों के अभिभावकों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने अपनी प्राथमिकता में अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा को रखा। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पठाती, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माएँ अपने बच्चों की बैरी हैं, शत्रु हैं, और पिता बैरी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। ऐसे बच्चों की वही हालत होती है जैसे हंस की सभा में बगलों की होती है, ऐसे ही निरक्षर लोगों की पढ़े लिखे लोगों में स्थिति होती है।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी प्राथमिकता में संपत्ति बहुत ज़्यादा खरीदने की जगह उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। आपके बैनर पर पीछे मैं देख रहा था, लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, लीडरशिप और गवर्नेंस। ये आपका मोटो है। परिभाषा भी किसी ने अब्राहम लिंकन की कही थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का राज, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अमेरिका कहता है कि हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम कहते हैं हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। मैं अमेरिका की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। पता नहीं उनके यहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग का कंसेप्ट है या नहीं। हमारे यहाँ है। द्वापर को गुजरे हुए 5400 साल हो गया है, तो सोचिए कि त्रेता को कितने लाख साल हो गए होंगे। हम ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि त्रेता में भगवान राम का जब राज्य था तब मुकम्मल डेमोक्रेसी थी। अंतिम अनुसूचित जाति का धोबी व्यक्ति वाशरमैन राजा की रानी के खिलाफ विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा उठाते हुए एक कमेंट करता है और राजा उसको स्वीकार करता है और अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा करवाता है, जब अमेरिका अस्तित्व में भी नहीं था। वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आल्सो। ये बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, राजतंत्र आया है। आप लीडरशिप की जो बात कर रहे हैं, हमने तो विश्व को लीडरशिप दी है। ऐसे ही एक धर्म संसद में विवेकानंद जी ने बहनों और भाइयों ही कहा था, उसमें 3 मिनट तक ताली बजी थी, क्योंकि वो लेडीज एंड जेंटलमैन वाली कल्चर वाले लोगों ने पहली बार बहनों और भाइयों सुना था। ऐसी हमारी लीडरशिप है। और गवर्नेंस, जो आप तीसरा शब्द कह रहे हैं, अभी भी दुनिया का सबसे अच्छा राज्य राम राज्य कहलाता है, जो भारत में हुआ। इससे अच्छी गवर्नेंस क्या हो सकती है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, जिसमें किसी भी प्रकार का कष्ट जनता को नहीं होता था और भेड़ और शेर एक घाट पे पानी पीते थे। ऐसी हमारी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस वाला हमारा देश है। मैंने आपके डेमोक्रेसी पे बोला कि ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट पे मत जाओ। मैं उन तमाम लोकतांत्रिक देशों से पूछ रहा हूं, हमारे यहाँ लोकसभा है, फिर राज्यसभा है, फिर विधानसभा है, फेडरल सिस्टम है, फिर विधान परिषद है, तो हमारे यहाँ नगर पंचायत है। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, शक्ति के विकेंद्रण करने के लिए, डिसेंट्रलाइज करने के लिए लोग, हमारी नगर पंचायत है, फिर नगर पालिका परिषद है, फिर नगर निगम है, फिर प्रधान है, सरपंच है, बीडीसी है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत का अध्यक्ष है। अभी भी हमारे कुछ लोगों को लगा कि डेमोक्रेसी मुकम्मल नहीं हुई है, तो छात्र संघ है, तो ब्राह्मण महासभा है, तो क्षत्रिय महासभा है, तो धनगर महासभा है, तो टीचर्स की एसोसिएशन है, तो छात्रों की है, तो नॉन टीचिंग की भी है, तो क्षेत्र बजाजा कमेटी है, तो आईएमए है, तो बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन है, तो टिम्बर मार्चेंट की एक अलग एसोसिएशन है, तो सर्राफे वालों की अलग है। ऐसा डेमोक्रेटिक देश दुनिया में कहीं मिलेगा? इतना लोकतंत्र हमारे यहां मजबूत है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र को और मजबूत किया है, महिला सशक्तिकरण को। कालाहांडी वाला राज्य उड़ीसा, जहां भूखमरी से कभी कांग्रेस के जमाने में लोग मरते थे, उड़ीसा पिछड़ा राज्य, उसमें सबसे पिछड़े आदिवासी और आदिवासियों में सबसे पिछड़ी महिला, और अंतिम पायदान पर खड़ी हुई एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बना करके राजनीतिक अंत्योदय करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मान्यताएं बदली हैं, डेमोक्रेसी की भी मान्यताएं बदली हैं और पद्म पुरस्कारों की भी बदली हैं। पहली बार
ऐसा हुआ है। महिला हर जात की पिछड़ी होती है और आदिवासी की तो बहुत पिछड़ी होती है। पद्म पुरस्कारों की मान्यताएं बदली हैं। पहले लोग सोचते थे कि जो बर्बरी का पर्स लेके चलते हैं, एलबी का पर्स रखते हैं, राडो की घड़ी पहनते हैं, रेबन का चश्मा लगाते हैं, ऋतु बेरी के कपड़े पहनते हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, यू नो करके फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, पद्म पुरस्कार उन्हीं के हिस्से में आएंगे। ये नरेंद्र मोदी ने मान्यता बदल दी है। अब पद्म पुरस्कार भारत में वो लोग भी पाएंगे जिनके पास राष्ट्रपति भवन जाने के लिए एक जोड़ी चप्पल नहीं हुआ करती थी। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं अच्छे नेतृत्व को खतरा है, लेकिन मैं जब भी मेरिटोरियस बच्चों के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पिछले 24 साल से जाता हूं तो धीरे से कान में पूछता हूं, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, साइंटिस्ट, सीए। एक बच्चे ने आज तक नहीं कहा कि मैं एमपी और एमएलए बनना चाहता हूं, मैं सीएम और पीएम बनना चाहता हूं। आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं कहा। और 20 के कालखंड में किसी ने यह भी नहीं कहा था कि वकील बनना चाहता हूं। शुरू के कालखंड में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, सरदार पटेल बैरिस्टर थे। बीच में जिसका कहीं एडमिशन नहीं होता था वो लॉ में लेता था। लेकिन मुझे आज खुशी है कि इस पूना में ही इतने अच्छे लॉ कॉलेज हैं कि आज चौथी बच्ची कहती है मैं एडवोकेट बनूंगी। ये भी जुडिशरी को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक स्तंभ यहां से मजबूत हो रहा है। शायद इस 3 दिन की छात्र संसद में किसी बच्चे में राजनीति के प्रति जिज्ञासा पैदा हो। तो मुझे लगता है कि अगर एक भी बच्चे में, पढ़े लिखे बच्चे में राजनीति के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई तो अच्छा नेतृत्व तो मिलेगा, जो आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी, ये भी कहना चाहूँगा, छात्र संसद से आप डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, लीडरशिप को निकालना चाहते हैं, तो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि बहुत ख्याल रखते हो परिंदे का दाना पानी का, इतने ही अच्छे हो तो परिंदा खोल क्यों नहीं देते, पिंजरा खोल क्यों नहीं देते। अगर आप वास्तव में लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं तो अपने विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव करवा दो। और छात्र संघ के चुनाव में जब इस कैंपस में जिंदाबाद, मुर्दाबाद और विदेश नीति पे, राजनीति पे, आंतरिक नीति पे, जल नीति पर, डिफेंस नीति पर भाषण देके जब बच्चे चुनाव जीतेंगे तो देश की संसद को अच्छा नेतृत्व मिलेगा। तो अच्छे नेतृत्व की कमी के पीछे ये भी है कि विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में आजकल स्टूडेंट यूनियन के चुनाव बंद हो गए। मिस्टर चतुर्वेदी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने लॉ साथ में की है, मैंने पुलिस में रहते हुए की थी और आप कर रहे थे, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी, मैंने ही ठीक कराई थी। ये छात्र, वो हुकुम सिंह टीचर थे, मेरे ख्याल से मुस्लिम लॉ पढ़ाते थे, रोक देते वो आपको। आजकल आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो मेरी वजह से पढ़ा रहे हैं, वरना आप पढ़ ही नहीं पाते। ऐसा मेरे को याद आ रहा है, मेरी मेमोरी भगवान ने ऐसे दी है। ये छात्र राजनीति का जलजला है। वो एडमिशन कराता है, वो एनसीसी दिलाता है, वो एनएसएस दिलाता है, वो सब्जेक्ट दिलाता है, वो स्कॉलरशिप दिलाता है, वो मार्कशीट को ठीक कराता है, वो टाइम पे डिग्री दिलाता है। इसलिए वो अच्छा नेता बन के उभर के आता है। कई बार घंटियां बज रही हैं, मैंने तो काफ़ी कुछ आपसे बात करने का मन बनाया था। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि राजनीति के मायने बदल रहे हैं। मैं जो अपने 6 कार्यकाल जीता हूँ, बड़ी छोटे से काम से जीता हूँ। सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयुष्मान का कार्ड बनवाना अथवा आधार कार्ड को ठीक कराना, और शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन एजुकल टू एमपी हो जाता था। अब ये चलेगा नहीं। जब ये बच्चे क्वालिटी एजुकेशन लेके जाएंगे तो वाटर हार्वेस्टिंग पे पूछेंगे नेता से, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे, ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे, ग्रीन गैसेस के बारे में बात करेंगे, रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत की भूमिका के ऊपर आपसे पूछेंगे। इसलिए राजनीति में आना होगा तो अच्छी प्रकार की एजुकेशन भी आपको लेनी पड़ेगी। हम विश्व गुरु थे
नहीं हैं, बनेंगे जरूर। ऐसे ही विश्वविद्यालयों से विश्व गुरु हम बनेंगे। मैं जब आ रहा था यहाँ तो जो आपकी फैकल्टी के बैठे थे तो उन्होंने कहा पूना को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कह रहे हैं। आपको ये बड़ा अच्छा लगता होगा कि आप पूना को, पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं। मुझे ये गाली लगती है। नालंदा का देश, विक्रमशिला का देश, तक्षशिला का देश। बच्चों, जिस साल नालंदा विश्वविद्यालय जो सैकड़ों साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नक्षत्र शास्त्र पढ़ा रहा था देश को, और जिस साल बहुत साल पढ़ाने के बाद बख्तियार खिलजी जिस साल जला रहा था नालंदा को, उसी साल जिसको आप ऑक्सफोर्ड कह रहे हो, और गोरे लोग फावड़ा लेकर ऑक्सफोर्ड की नींव को खोद रहे थे। इतने साल वो हमसे पीछे। हम विश्वगुरु थे। जेल वेयर ने टेलीविजन बाद में बनाया है। हमारे यहाँ द्वापर में था, युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, और हस्तिनापुर में संजय टेलीविजन देख करके बता रहे थे। बुलेट प्रूफ जैकेट अभी भी हम सैनिकों को नहीं दे पा रहे हैं, कर्ण के पास थी। फायर प्रूफ जैकेट अभी भी सारे फायरमैन को नहीं दे पा रहे हैं। होलिका पे थी, प्रहलाद को जलाना चाहती थी, खुद जल गई क्योंकि जैकेट प्रहलाद के पास पहुंच गई, होलिका जल गई। मार्कोनी ने वायरलेस बहुत बाद में बनाया है। कंस जब अपनी प्यारी बहन को मेरी लोकसभा में मथुरा, बटेश्वर से लेके मथुरा वाया आगरा जा रहा था, आकाशवाणी हुई थी कि तुम जिसको लेके जा रहे हो उसका पुत्र तुम्हें मारेगा। हमारे पास आकाशवाणी और एफएम आज से 5000 साल पहले थी। इंटरबैलिस्टिक मिसाइल 7 बना रहे हो, हमारे पास अग्निबाण थे। और ये अंग्रेज लोग अभी किडनी ट्रांसप्लांट करके, लीवर ट्रांसप्लांट करके अपने को बहुत बड़ा चिकित्सक मानते हैं। हमारे यहाँ गणेश जी की सर्जरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्जरी का उदाहरण है। और जो गणेश जी हैं, ये गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू या जेम्स हेडली चेज या आर्थर कॉनन डायल राइटर के पात्र नहीं है, वो हमेशा हैं। और महाराष्ट्र से ज़्यादा गणेश जी को कौन जानता होगा। ये शिवाजी सामंत की भी उपन्यास के पात्र नहीं है, ये थे, ये हैं और ये रहेंगे। इसलिए हमारे यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी भी हुए हैं कौरव परिवार में, हमारे यहाँ एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट भी हुए हैं, हमारे यहाँ पिता की जांग से मानधाता का जन्म हुआ है। इसलिए चिकित्सा में भी हम विश्वगुरु थे, नहीं है लेकिन बनेंगे जरूर। मैं बस ये कह के कि अगली घंटी बजे, आपको क्रेज हो या ना हो राजनीति का, लेकिन मैं आज एक बात कह के अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि हिंदुस्तान के हर फील्ड का हेड एमपी बनना चाहता है। मैं टेल का नाम नहीं लूंगा, मैं आईएएस बनना चाहता था, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी टीएन चतुर्वेदी, होम सेक्रेटरी आरके सिंह और शेषन साहब एमपी बनना चाहते थे, तो मैंने आईएएस की किताबों में आग लगा दी। फिर आईपीएस बनना चाहता था तो निखिल कुमार डीजी बीएसएफ, ब्रजलाल साहब, राम आश्रय, श्यामलाल और तुम्हारे मुंबई के सत्यपाल सिंह कमिश्नर साहब जब एमपी बने तो वो भी आइडिया छोड़ दिया। फिर आईएफएस बनना चाहता तो मणिशंकर, मीरा कुमार, नटवर सिंह और जयशंकर जी जो विदेश सचिव थे वो आईएफएस थे, वो आजकल एमपी बने हैं। फौज का जनरल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल वीके सिंह साहब एमपी बने हैं, तो फौज में जाना छोड़ दिया। वकील बनना था, लॉ की तुम्हारे साथ, लेकिन जब मैंने देखा कि जेठमलानी साहब, कपिल सिब्बल साहब, रविशंकर जी, सलमान खुर्शीद साहब भी वकील बन रहे हैं, तो फिर वो भी आइडिया ड्रॉप किया। क्रिकेट का बल्ला थामा, लेकिन जब क्रिकेट के भगवान को एमपी बनना देखा, फिल्मों में जाने की पूना आना चाहता था, लेकिन जब अमिताभ बच्चन को, राजेश खन्ना को, दिलीप कुमार को, विनोद खन्ना को, गोविंदा को, राज बब्बर को भी एमपी बनते हुए देखा चाहा, फिर सोचा पैसा कमाएंगे। लेकिन सिंघानिया जी के ही खानदान के लोग, बिरला जी, के बिरला साहब, अनिल अंबानी साहब, विजय माल्या साहब, अमर सिंह साहब जब एमपी बने तो मैंने वो भी पैसा कमाना भी छोड़ दिया। इसलिए देश की हर विधा का, इसरो के बैठे हैं, लेकिन एटॉमिक एनर्जी के राजा रमन्ना साहब हमारे यहाँ एमपी बन करके आए थे। मैं अभी बहुत से फील्ड छोड़ रहा हूँ, स्वामीनाथन साहब और कस्तूरी रंजन साहब। इसलिए बच्चों, जब ये सारे लोग 35 साल गुजारने के बाद राजनीति में आए हैं, मैं सीधे सीधे पीली चिट्ठी लेकर के आपके लिए आया हूं कि फिल्मों में जाने से पहले, क्रिकेट में जाने से पहले, उद्योगपति बनने से पहले, फूलन देवी की तरह डकैत बनने से पहले,
अथवा बड़ा वकील बनने से पहले या CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा और गोगोई बनने से पहले सीधे सीधे पॉलिटिक्स में आ जाओ, ये मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। बंगाल और पंजाब इसके दो मजबूत कंधे हैं, कश्मीर इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी जटाएं हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी दो जंघाएं हैं, विंध्याचल इसकी कमर है और नर्मदा इसकी गर्दनी है, कन्याकुमारी इसके पैर हैं, कंकर इसका शंकर है, सूरज और चांद इसकी आरती उतारते हैं। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे इसके लिए और हम मरेंगे इसके लिए। राहुल जी की एक बात का जवाब जरूर देना चाहूँगा कि आप इंडिया को भारत चाहते हैं, मैं भी इससे अपने को संबद्ध करता हूँ, मैं संबद्ध करता हूँ। लेकिन लोक भाषा पर ध्यान दीजिए, लोक भूषा पर ध्यान दीजिए, लोक भोजन पर ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी रुतबे की भाषा है, माध्यम की भाषा है, नौकरी की भाषा है। कृपया घर में मत आने दो। घर में मराठी बोलो, कन्नड़ बोलो, तेलुगु बोलो, हिंदी बोलो, तमिल बोलिएगा, भोजपुरी बोलिएगा। आप जिस भारत की बात कर रहे हैं उसको खतरा कितना है? कुत्ते के साथ अंग्रेजी बोली जा रही है, लूसी गो, लूसी सेट। एलीट क्लास की दादियां और नानियां अपने न्यू बॉर्न बच्चे के साथ अंग्रेजी में बात करती हैं और आप भारत की बात कर रहे हो। इसलिए पिछले 63 साल से भारत सरकार चुनता था और इंडिया सरकार चलाता था। ये 8 साल से भारत सरकार चुनता है और भारत ही सरकार चलाता है। इसलिए 12 का बीमा, 30 का बीमा, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण आवास, शहरी आवास, ये सब हम लोग दे रहे हैं। आपके भारत के लिए एक बात कह दूं, खूबसूरत नर्स से बदसूरत माँ हमेशा अच्छी होती है। इसलिए हमारी हिंदी, हमारी मराठी, हमारी कन्नड़, हमारी तमिल, हमारी तेलुगु, ये हमारी माँ हैं, भले ये थोड़ी सी खूबसूरत ना हो। तो भारत जब मुकम्मल करना चाह रहे हो, इसलिए भी करना है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म को बहुत सारे खतरे हो गए हैं। 1191 में तराई के युद्ध में हम जीत गए, 1192 में हार गए, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक गुलाम के गुलाम गोरी ने हमको गुलाम किया, फिर उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर उसके गुलाम इल्तुतमिश ने, फिर उसकी लड़की रजिया ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, फिर औरंगजेब को भी इस महाराष्ट्र को झेलना पड़ा। इसलिए सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा और भारत को, जम्बू द्वीप को खतरा पहुंचा है। फिर लॉर्ड मैकाले आ गया, अंग्रेजी आ गई, तो ये खतरे हैं। इसलिए मैं जो चाहता हूं बच्चों से, वो शेर के साथ समाप्त करता हूं, जो वीसी साहब ने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन भी होना चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर यह आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Honorable Minister, sir. Thank you very much for your words of wisdom. It was really a great joy and to hearing your views. Thank you very much for your thoughts. And my friends, it's now time when I invite the founder and chief patron of MITES MIT Pune and president of MIT World Peace University, and the one who's behind the creation of Philosopher Century Ganesh for our World Peace Prayer Hall and World Peace Prayer Library, World Peace Dome. And before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film on Philosopher Century Ganesh for our World Peace Prayer Hall and World Peace Library.
I appeal to the Vice President and Honorable Chief Minister to recognize this World Peace Dome as a structure of national and global importance and support to promote it in such a way that it evolves as one of the prominent tourism destinations of the world. 21वीं शताब्दी में मेरी भारत माता विश्व गुरु बनने की काबिलियत रखता है. It will become a विश्व गुरु in the 21st century. उसका छोटा सा उदाहरण, छोटा सा सिंबल यहाँ बन गया है, ऐसा मेरा मानना है. Please put your hands together and welcome with a big round of applause the UNESCO chair holder, revered Professor Dr. Vishwanath Karat, sir. It's okay. Honorable Chief Guest of today's function, Professor S.P. Singh Sahab, Singhania जी, हमारी छोटी बहन श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती, Mr. Joshi, and all others sitting on the dais. Friends, I can only say it truly fills my heart with a sense of pride and pleasure when I stand before you on this very unique occasion of the 12th Indian Students' Parliament, और भारतीय छात्र संसद जिसे कहा जाता है. मुझे इस बात की खुशी है कि आप सारे भारत से आए हुए very learned students from various universities, they have come here with all the tremendous passion and fire in their belly. मैंने जो सुना कि भाई बोलना ठीक है, भाषा अलग अलग होती है, लेकिन unless there is a fire and the passion in the belly, it has no meaning. But I could see that the words of wisdom and the words of wonderful understanding of the union of science and religion oblique spirituality, जो इस संस्था का मकसद है. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि लेकिन those students who have come from all over India and even those students who have joined this institution newly, if they can appreciate and understand the very essence and philosophy behind the mission which this institution has taken up. And when you see this Mr. Rahul and his team organizing such events, भारतीय अस्मिता की बात हो, Indian Students' Parliament की बात हो, Women's Parliament of India की बात हो, इसके पीछे जो मकसद है, that is only I will appeal to you. I will not speak very elaborately, but a mention was made just now while making my own introduction very briefly, and it was shown to you that philosopher Sant Jnaneshwara and philosopher Sant Tukaram, the World Peace Dome, and the biggest in the whole world by structure. But Dr. Mashwarkar has said that it's not the structure that is important. It's the message and it's the concept behind. विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय, स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लेबोरेटरी की बात है. वो डोम नहीं सिर्फ जो किसने बनाया नहीं, वो बन गया है, जिसको आर्किटेक्ट नहीं, प्लानर नहीं, डिजाइनर नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई नहीं, कैसे बना? आई एम नॉट an architect myself. I am not trying to pose you something.
But I'm trying to make a statement, very positive statement. In the known human history, ये मेरा शब्द नहीं, ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट रहे वेंकैया नायडू साहब, जिन्होंने वर्णन किया, this will be another wonder of the world. It is his appreciation. But what for? The basic issue is it reveals and expresses the very principles and laws of nature and life. अभी nature की बात हो गई, to be in tune with the nature, ऐसी भी बात है. तभी समझने की कोशिश करो कि संस्था के अंदर आते ही वो सामने संत ज्ञानेश्वर का फोटो रखा है, एक मूर्ति रखी है. क्या मकसद भाई? ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इट्स अ वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टैच्यू which was kept at the very doorstep of the institution? Let me only, friends, very briefly tell you that I am a student of engineering. As such, I never wanted to be an engineer myself. But I became an engineer, became a teacher, a professor, started MIT, and today we have started the MIT World Peace University based on the understanding, appropriate understanding of the role of science and spirituality. ये क्या है भाई? स्पिरिचुअलिटी क्या है, साइंस क्या है, उसकी खोज. और इसलिए जहाँ भी देखोगे लिखा है हमेशा फिलोसोफर्स ज्ञानेश्वरा टू अल्बर्ट आइंस्टाइन. ये जर्नी है. इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी टू अंडरस्टैंड द एसेंस बिहाइंड दिस, what science stands for and what spirituality stands for. ये जो अध्यात्म शास्त्र है जिसके बारे में कोई चिंतन है बड़ा लंबा, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा. But I want to tell you, friends, that if you try to really go stand before the statues in the dome, which is for the first time again it has happened, जरा अंदर जाके गौर से देखो. Go in, stand before the statues of the Jesus Christ, Tathagat Gautam Buddha, Aurobindo. You take the name, the Einstein, Penrose, you take the names who have been addressing the world today. I think Karthikeyan sahab, you are sitting here, I can see you, a very great man. You are going to listen to them possibly tomorrow or today. Friends, remember, the time has come, and I have a satisfaction that after about 30-40 years of a teacher being for engineering, but basically a Vaishnavite, that has helped me to understand all these mechanisms. The living mechanism, the very body, the smallest of the smallest of the small living cell has a body and has the brain, and it has the soul and the mind. The present science has studied only the body and the brain, but we have forgotten the soul and the mind. And the question is today before the world, what is the chemistry of mind? ये मन की बात नहीं, दिल की बात है, दोनों भी है. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई कि it is the duty of you people all to present this vision, present this mechanism, and then understand this coronavirus. Understand the COVID-19, which has made the whole world to sit behind the doors. All the Security Council members, possibly Karthikeyan sahab will tell us the details. All the Security Council members, like America, the Britain, China, Russia, all the great nations, the powerful nations as they call themselves. Why they were sitting behind the doors? Hiding behind, remember. All the temples, the masjids, the mosques, everything was closed. What was that which made us close down? And now, possibly, friends, remember, it is the duty of you as a man of science and understanding what spiritual component stands for. Sant Tukaram has said, Anu Renu Thokoda or Tukasha Akasha Evda. One word. Shanti Parte Nahi Sukha. एर अवघेची दुःख म्हणून शांती राहा उतरायला पहिले तेरा. छोटे शब्द है, लेकिन they have a basis behind. They have a very scientific revelation.
And I'll just tell you lastly, this very statue which I referred to, philosopher Singhania, at the age of 16, only 16 साल की उम्र है भाई, समझ तो लो, उम्र है 16 साल की, 730 साल के पहले की बात है. How many years? 730 years back. This boy from your country, Mother India, is revealing to the whole world and telling them to understand the very mechanism of life. And he says, Om Namo Jyadya, Veda Pratipadya, Jaya Jaya Swasvedya Atmarupa. Self-consciousness. Self क्या है? आत्म स्वरूप जानने की कोशिश करो, इतना शब्द है. लेकिन there are many scientific revelations. He says rising of the sun in the east and going to the west is an illusion before Galileo. समझने की कोशिश, पढ़ो तो सही, इसको अंधश्रद्धा मत कहो. आप साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, मैनेजमेंट लोग होंगे, मेडिकल के होंगे, ये पढ़ने की कोशिश करो भाई, मेरी प्रार्थना है आपको. ये यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमने ये पेनरोज और आइंस्टाइन के कहने की बात है, ओम टेंडिंग टू ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जगह जगह पर यह इक्वेशन लिखा है मैंने. एंड आई वुड लाइक टू प्रेजेंट टू यू बिफोर, बिकॉज आई एम पुटिंग दिस बैनर्स एंड पोस्टर्स विच हैव अ मीनिंग बिहाइंड. ओके, मजे की बात नहीं. इफ यू फील लाइक आस्किंग क्वेश्चंस, आस्क इट. Meet your teachers, discuss with them why you have written this like this. Is it true? And beautifully, we have been very fortunate friends. Then we have been talking about the Indian Students' Parliament. आप लोग हैं कि जो पहले समझने की कोशिश करो, धर्म ही नहीं, राष्ट्र धर्म. धर्म तो होता है भाई, हिंदुत्व यानी भारतीय एकात्मता है. वो भारतीय एकात्मता है, हिंदुत्व. किसी धर्म की बात नहीं होती है. सारे धर्मों का राज दिया है. रिलीजन इज नथिंग बट टू परफॉर्म योर ड्यूटी. ये विवेकानंद का शब्द है, 1893 का. और जहाँ विवेकानंद ने दुनिया को, व्हेन वी वर अंडर द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश, 1893 के बाद 1897 में कहा है. एंड ही हैड मेड अ प्रोफेसी. Vivekananda tell the world that time to remember that my mother India, which is on the clutches of the British, is going to get free from the clutches after 50 years from today. 1897 add karo 50 saal. It comes to 1947. विजन बोला जाता है, इनसाइड बोला जाता है, ये दृष्टा पुरुष बोला जाता है. दिखाई देता है भाई, भविष्यवाणी. और उसी तरह से ये हुआ और भाषण हुआ है कि नाउ इंडिया हैज़ अ रोल टू प्ले. क्या रोल है मेरा? टू शो द पाथवे ऑफ हार्मनी एंड पीस टू मैनकाइंड. दुनिया को सुख, समाधान और शांति का मार्ग दिखाने का दायित्व मेरे भारत माता का. माई मदर इंडिया. गर्व नहीं, स्वाभिमान है. स्वत्व, स्वाभिमान और स्वधर्म, 3 शब्द है. स्वधर्म है, स्वाभिमान है और स्वत्व है. तीनों जगह के रखो भाई. समझ तो लो आप किसकी संतान हो, क्या कुल है आपका. और कुलीन कन्या और कुलीन सुपुत्रों का देश है ये सारा. अभी वक्त आ गया है दुनिया के सामने दिखाने का, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना द वर्ल्ड हैज़ रियलाइज, वो जो अल्टीमेट है ना, जिसे ईश्वर कहा जाता है, जिसे गॉड भी कहा जाता है. ईश्वर का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर का मतलब शक्ति है भाई, शक्ति, एनर्जी है. इट्स इनविजिबल. ये तो साइंटिस्ट है ना, अपन समझ सकते हैं. तो इसकी दिशा में जाने का प्रयास है. मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे वाइस चांसलर चिटनीस मिलिंद पांडे एंड स्पेशली Rahul and his team, who has been trying to promote this cause and organizing this National Students' Parliament, has a deep-rooted passion and fire to show the pathway. ये लीडरशिप बनाना, नेता होना, राजनीति की बात करना, लेकिन राजनीति का सही मकसद क्या है? ये समाज का कल्याण, समाज का हित, विश्व शांति की बात.
विश्व कल्याण की बात, ये भारत का दायित्व है। वो रास्ता दिखाने के लिए ये प्रयास है। मैं आपको अभिवादन करता हूँ सबको। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom. And my friends, we have just gathered here, we heard few sessions and we went back. It shouldn't happen that way. There has to be something concrete that we take with us from this movement of 12th Bharatiya Chhatra Sansad. And hence, it is now time that we abide ourselves with an oath, for which I would like to request everyone on the dais, off the dais, to please rise in their seats. Please put their right hand forward as Mr. Dhirendra Singh administers an oath to all of us. I would like to request you to please listen to his words carefully and then follow him. हम सभी भारतीय छात्र संसद के प्रतिभागी ये प्रण करते हैं कि हम भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहकर अपनी भारतीयता को दृढ़ करेंगे। हम हमारी बुद्धि, भाषा, आचार और विचारों से जागृत विश्व नागरिक बनेंगे। हम व्यक्तिगत उद्देश्यों से ऊपर उठकर सही मायने में भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बदलाव के संवाहक बनेंगे। राष्ट्र निर्माण, बहुमुखी विकास व देश सेवा के प्रति समर्पित होकर इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे और राजनीति में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much. I request everyone to be seated, please. Everyone in the audience, please be seated. I request everyone to please pay attention to an important announcement. My friends, after this session, we will have a lunch break. Please note, please be seated. These important announcements are for you. Please ensure that you carry your iCard and you reach out to designated area where the food would be served to you. You will have to produce your iCard along with the coupon against which you will be given the lunch. Please note that you will have to come back at 2:45 p.m. sharp for the next session, which will start from this pandal. Sir, I request Dr. K. Girisan sir to kindly propose vote of thanks. Namaste. I deem it as a great privilege to be here to propose the vote of thanks in the inaugural ceremony of the 12th edition of the Bharatiya Chhatra Sansad, the largest classroom of democracy conceived by Sri Rahul to inspire youth to become active citizens and dynamic leaders and to create political leaders for today and tomorrow. The seed of the School of Government was sown in 2005 with the objective of creating a pool of committed, ethical, dynamic and professional leaders, which was grown into a tree through Bharatiya Chhatra Sansad in 2005. I think over the last many editions of Bharatiya Chhatra Sansad, the tree has become a forest. And this is nothing less than a revolution. It's a non-violent revolution, but very powerful revolution.
It's a revolution to transform youth to become clean leaders, committed leaders, ethical leaders, dynamic leaders, professional leaders, and leaders with a vision for tomorrow, for changing the political landscape of Bharat tomorrow. And I believe all those who are associated with these editions of Bharatiya Chhatra Sansad, including which is on today, they are on a mission. And Bharat is a country of 130 plus crore of population. And the contribution of School of Government and the Bharatiya Chhatra Sansad editions may be very small, but it is very significant. We have no doubt that the critical mass of the leaders who come out of this school as well as the Bharatiya Chhatra Sansad editions will make a difference tomorrow. Maybe it may be viewed as a small drop in the ocean, but these drops will definitely make a change in the ocean in the days to come. And let me just move on to my duty. On behalf of the Board of Trustees of Mayors, the Founder President, Professor Vishwanath Karat, and the Executive President and the Founder of MIT SOG, Sri Rahul Karat, and all Vice Chancellor and all academic leaders, administrative leaders, the faculty, staff, students, and all the delegates here, I propose vote of thanks, and especially to the Chief Guest of the day, Professor S.P. Singh Baghel, and Dr. K. Sivan, Dr. Anant Prakash Joshi, and Madam Kaushiki Chakraborty, and Anant Singhania ji. In fact, they have from a galaxy, from varying disciplines, and they have shared their words of wisdom and expertise and their guidance and motivation. And we are blessed with the presence of Sri Daryada ji and Pandit Vasantarao Gadgil ji. And I also appreciate the words by the student leaders, Nandita Jamwal and Dhirendra Singh. And I would like to place on record the inspiration behind the university, Professor Vishwanath Karat and Sri Rahul Karat, for behind the initiative of School of Government as well as Bharatiya Chhatra Sansad. And on behalf of all of us of the Bharatiya Chhatra Sansad and Foundation, I express a warm welcome and warm greetings to all of you, all the dignitaries, and the delegates, especially to the delegates of 12th edition of Bharatiya Chhatra Sansad, and to all those academic leaders, administrative leaders, faculty, staff, students, and all those here, and especially to the friends from media. And I'm sure this 3-day program, this 3-day event, these 3-day interactions, discussions will be academically enriching, professionally satisfying, and personally beneficial to each one of you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, Dr. Girisan sir. Thank you very much. I request all the media personalities, all those who are representing various media houses, are requested to come in the front. Honorable Executive President, Shri Rahul Karat sir is going to meet and greet you. I request all the media personalities, please come forward at the central podium in the front. I request all the media personalities, the representatives of various media houses, are requested to come forward. They would be welcomed and felicitated by Shri Rahul V. Karat. See you all at 2:45 p.m. sharp. Thank you.
Joined by Shri Satish Mahana ji, Shri D.R. Karthikeyan ji, Advocate Krishna, Allavaru ji. I shall request all the guests to proceed towards the bell of democracy. As per the tradition of MIT World Peace University, we shall ring the bell of democracy. My friends, the reverberations and the echoes of this bell is a reaffirmation of our faith in the continuance and strengthening of democracy in our glorious country. We aim to let the world hear the celebration of democracy through this bell. Let the sound of bell purify the atmosphere and let positive thoughts seep in our mind. Thank you so much. Now I shall request all the dignitaries to proceed towards the dais. Today we have been joined by Shri Satish Mahana ji, Honorable Speaker, Uttar Pradesh Legislative Assembly, Advocate Krishna Allavaru ji, Joint Secretary, All India Congress Committee and National In Charge of Indian Youth Congress, Shri D.R. Karthikeyan ji, IPS retired, former Director, CBI, former Director General, NHRC, and former Special Director General, Central Reserve Police Force. With a big round of applause once again, my friends, please welcome all the noted dignitaries of this session. Now I shall request Shri Dheeraj Singh ji, Director, School of Media and Journalism, MIT World Peace University, for the welcome address. Over to you, sir. Thank you. Freedom of speech is a very key ingredient to make a democracy truly functioning. It is one of the building blocks that makes a democracy inclusive, participative, and truly working in the real sense. The Bharatiya Chhatra Sansad has, for the past decade, more than a decade, been rendering yeoman services to the cause of democracy and bringing youth together in this very, very noble mission. Today's session, Freedom of Speech, Where to Draw the Line, has some sterling people participating in it. We have the Speaker, Vidhan Sabha Uttar Pradesh, Shri Satish Mahana ji. We also have Shri D.R. Karthikeyan ji, former CBI Director, former Director General NHRC, former Special Director, Central Reserve Police Force. We also have Advocate Krishna Allavaru ji. He's the Joint Secretary of All India Congress Committee and National In Charge of Indian Youth Congress. We also have Shri Tushar Kanti Behra, Honorable Minister of State, Home Affairs, Electronics and IT, Sports and Youth Services, Government of Odisha. And we have Param Pujya Shri Indresh Upadhyay ji, who is a renowned spiritual leader, orator of Srimad Bhagavad Katha, and founder of Bhakti Path. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Now we have arrived at the most awaited moment of the session, where we shall felicitate our notable dignitaries of this session. May I please request Honorable Executive President Shri Rahul V. Karat sir to felicitate Shri Satish Mahana ji. Honorable Speaker, Uttar Pradesh Legislative Assembly. That should go for a big round of applause, my friends. Honorable Executive President Shri Rahul V. Karat sir is felicitating Shri Satish Mahana ji, Honorable Speaker, Uttar Pradesh Legislative Assembly.
Next, I shall request Sir to felicitate Shri D.R. Karthikeyan ji, IPS retired, former Director, CBI, former Director General, NHRC and former Special Director General, Central Reserve Police Force. A huge round of applause, my friends. Now I shall request Sir to felicitate Advocate Krishna Allavaru ji, Joint Secretary, All India Congress Committee and National in charge of Indian Youth Congress. A huge round of applause, my friends. We are witnessing a historic moment where the dignitaries are being felicitated by our Honorable Executive President, Shri Rahul V. Karat, sir. Ladies and gentlemen, we are starting with the first session of the 12th edition of Bharatiya Chhatra Sansad. The theme of this session is freedom of speech, where to draw the line. The freedom of speech is often regarded as a crucial yardstick for a society's level of civilization. While freedom of speech commonly holds a positive connotation, it has also been shrouded in controversies and debates. Let us discuss. Before proceeding with this session, I shall request my technical team to relay the session video. Over to my technical team. This session is based on freedom of speech, where to draw the line. Freedom of speech has long been recognized as a vital cornerstone of a free and democratic government. Nonetheless, it has also long been recognized that these freedoms cannot be unlimited. While its importance remains beyond doubt, recently the primacy of freedom of speech has increasingly been challenged by political scientists, jurists, and politicians alike. From long-standing concerns about hate speech and more recent fears about no platforming and fake news, questions about the just and proper limits to that freedom are being confronted by democratic societies the world over. By bringing the hitherto divergent scholars of the subject together, the agenda seeks to represent a major step forward in understanding and addressing some of the most pressing challenges facing modern liberal democracies. In this session, we are going to discuss the right to freedom of speech. As we all know, freedom of speech is a fundamental democratic right, but every freedom comes with a certain number of responsibilities. Here, we will throw some light on the part of responsibilities allied to freedom. The Constitution of India provides us with the freedom of speech via Article 19, but not in an absolute way. Certain restrictions have been imposed on this freedom. Therefore, it becomes important to understand where to draw the line while exercising this freedom of speech. जब हम भारतीय छात्र संसद की बात करते हैं, तो उसमें एक बड़ी भूमिका होती है छात्रों की, उनकी सोच की, उनकी धारणाओं की। तो चलिए सुनते हैं उन सभी छात्र सांसदों को जो आज के हमारे इस बहुत ही आवश्यक विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। It is very, very important to know their views. I would like to invite our first student leader of the session, Ms. Aditi Dwivedi, all the way from Chhattisgarh. Please give her a huge round of applause, my friends. कई मौलिक कर्तव्य दिए और कई मौलिक अधिकार दिए, नियमों उपबंधों के जरिए भीम गांधी के सुविचार दिए। हम अधिकार तो चाहते हैं पर कर्तव्यों को भूल गए। संविधान की अच्छी बातें
कब के फांसी झूल गए। इस महाग्रंथ ने भारत को अधिकारों की आबादी दी, कोई बंधा सा खुद को ना पाए, अभिव्यक्ति की आजादी दी। यह आजादी मिली हमें राष्ट्र के महिमा मंडन के लिए, पर दुरुपयोग हो रहा है इसका माँ भारती के खंडन के लिए। नमस्कार पुणे, शिवाजी महाराज की पेशवाई भूमि को छत्तीसगढ़ की बेटी का नमन। इस सभा में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, मेरे युवा साथी एवं समस्त सभाजनों को मेरा सादर प्रणाम। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) अ के तहत हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति का शाब्दिक अर्थ है मन की बात, वही मन की बात जो हमारे प्रधानमंत्री अक्सर किया करते हैं। और हम सभी भारतीय नागरिक अपनी अभिव्यक्ति के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं। हम सभी के हाथों में टुनटुना रहे स्मार्टफोन में एक ना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो 100% मौजूद है। इन पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जब तक यह आदान प्रदान भाई बहन दोस्त यार और नाते रिश्तेदारों तक सीमित है, तब तक तो बात सुगम है। परंतु जब कोई व्यक्ति किसी नेता, अभिनेता, संघ, समुदाय या देश के बारे में अपने विचार बयां करने लगता है, तब यह आलोचना का एक विस्तृत रूप ले लेता है और तब जन्म लेती है जरूरत लक्ष्मण रेखा की। क्योंकि लोग तो महज अपनी उंगलियां चला अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर अगले ही क्षण भूल जाते हैं, परंतु कौम के ऐसे ही बयान निंदा का एक सागर भर किसी के निजी एवं व्यवसायिक जीवन में तूफान ला देते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एक सुप्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लोगों के आपत्तिजनक बयान हटाने का अनुरोध किया, परंतु उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर भारत सरकार को चुनौती दी। परिणाम स्वरूप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहिष्कार किया जाने लगा। यह नवीन भारत है जो संविधान में युक्त कानून एवं लक्ष्मण रेखाओं से प्रशासित है। यह लक्ष्मण रेखा परम है, यह लक्ष्मण रेखा सर्वमान्य है। इसे लांघने का अधिकार ना किसी व्यक्ति विशेष को है और ना ही किसी संघ समुदाय को। इस राष्ट्र मंच के माध्यम से मैं अपने युवा नेताओं से गुजारिश करूंगी कि वे सभी संवेदनशील विषयों पर कार्यरत हों एवं अपने अधिकारों के साथ साथ आई जिम्मेदारियों को समझें। साथ ही वे सभी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपरिहार्य हथियार के रूप में इस्तेमाल कर देश में सकारात्मक बदलाव की लहर लाएं। चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यह बात जो तुमको चुप गई, तुम्हारा लहू जरा सा खौल गया, बात तुम्हारे कर्तव्य की आई, तुम चादर ओढ़कर सो गए, और बात तुम्हारे हक की लड़ाई, तुम देश विरोधी हो गए। धन्यवाद। जय हिंद। क्या बात है अदिति, थैंक यू सो मच। I would request Honorable Executive President Shri Rahul V. Karat sir to felicitate Miss Aditi. A huge round of applause, my friends. Congratulations, Aditi. I would call upon our next student leader, Mr. Pratap Raj Tiwari, all the way from Madhya Pradesh. पुणे की इस पावन धरा पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में अपना नमन करते हुए मैं प्रताप राज तिवारी, मध्य प्रदेश राज्य से भारत मां का सेवक, आप सभी को अपने तहे दिल और आत्मा से भारतीय छात्र संसद के इस गौरवपूर्ण मंच के द्वारा आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, सोचिए क्या हो यदि सूर्य अपनी लक्ष्मण रेखा लांघकर पृथ्वी के निकट आ जाए, या नदी और समुद्र अपनी सीमा पार किसी आबादी क्षेत्र में दाखिल हो जाएं, तो विनाश निश्चित है। इसी प्रकार अभिव्यक्ति की आजादी जब जब अपनी लक्ष्मण रेखा लांघती है, तो सामाजिकता, मानवीयता, आत्मीयता और राष्ट्रीयता के स्तंभों को जड़ से हिला देती है। साथियों, अभिव्यक्ति की यह आजादी एक परम वीर की उस खड़क के समान है जिसमें समस्त सामाजिक बुराइयों को नष्ट करने का बल तो है ही, परंतु जिसकी धार इतनी प्रबल है कि कभी कभी समाज में ही दरार डालने का कार्य कर देती है। इसकी इस धार का अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि जब स्वयं ईश्वर भी इसके समक्ष आ गए, तो मां सीता को महल से निकालने पर भगवान श्री राम और महाभारत में श्री कृष्ण की कूटनीतियों को भी गलत ठहरा दिया।
आज समय की प्रगति के साथ संविधान का सुरक्षा कवच, उसमें एक मौलिक अधिकार व उसके तय युक्तियुक्त निर्बंधन होने के बावजूद मुझे तब अभिव्यक्ति की आजादी अपनी चिता पर लेटी हुई दिखाई देती है जब इसका प्रयोग हमारी भारतीय सेना की वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है। अरे लक्ष्मण रेखा से बहुत दूर नजर आती है जब कभी हमारे भारत देश में ऐसे नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर आजाद करा के रहेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी उस समय तार तार हो जाती है जब किसी अभिनेता को भारत की भूमि में सुरक्षित महसूस नहीं होता, जब कभी दुर्भाग्यवश मेरे कानों में किसी आतंकवादी के समर्थन में या सुनने में आता है कि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इतना ही नहीं साथियों, आज मीडिया डिबेट जैसी कई जगहों पर रोजाना लक्ष्मण रेखा लांघकर अभिव्यक्ति की आजादी का कत्ल हो रहा है। संविधान, सत्ता, समाज तीनों इस समस्या के सामने लाचार हैं। संविधान अपनी मर्यादा के कारण, सत्ता अपने स्वार्थ के कारण और समाज अपनी अज्ञानता के कारण इसके आगे लक्ष्मण रेखा नहीं खींच पा रही। क्योंकि क्या भ्रमित, गुमराह, जाति व धर्म में बटा समाज इतना सामर्थ्य रखता है? परंतु जब मैं स्मरण करता हूं विश्व गुरु और वसुधैव कुटुंबकम जैसे उस भारतीय समाज को, जहां स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया, अरे जहां की माटी ही चंदन है, जहां से स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुषों ने समूचे संसार को मानवीयता और मर्यादा का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसके समक्ष सारे पुरस्कार बौने हैं, तो महसूस कर पाता हूं मेरे भारत का वह असीम बल जिससे इस बार लक्ष्मण रेखा सीता की कुटी के बाहर नहीं अपितु रावण के किले के बाहर बनाई जाएगी। क्योंकि विचार मानसिकता के अधीन होते हैं और अभिव्यक्ति विचारों के अधीन। हमें केवल अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। अगली कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि है तमन्ना कि इस देश को मैं बादलों में बसा दूं, एक बार पुनः सभी को आजादी के पंख लगा दूं। मुझे अपने रक्त से ही क्यों ना खींचनी पड़े, मुझे अपने रक्त से ही क्यों ना खींचनी पड़े, पर इस देश के समक्ष हर बुराई के आगे एक लक्ष्मण रेखा बना दूं, एक लक्ष्मण रेखा बना दूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Mr. Pratap. I request Honorable Executive President Shri Rahul V. Karaj sir to congratulate Mr. Pratap and felicitate him. Let's give a huge round of applause to Pratap Raj Tiwari. Now I would invite our next student leader, Ms. Nandini Ravishankar, to put her views in front of us. கற்றது கை மண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு. Hailing from Tamil Nadu, the literal translation of this is whatever we have learnt in law is something which is extremely handful, and what is yet to be learnt is a lot more. Fali Nariman, the greatest of the Indian jurists of India, once said, if at all any constitutional amendment has to be done to the core values of the Indian Constitution, the lowest ebb of intolerance that persists in our country with respect to freedom of speech and expression has to be looked into. Very warm greetings to one and all present here. I, Nandini Ravishankar, a student of BBA LLB Honours, takes this privilege to speak on the topic, freedom of speech and expression, where is the Lakshman Rekha? Every one of us knows about Article 19, which talks about freedom of speech and expression. But often, why is this necessity of Lakshman Rekha? It is because it's often taken for granted. Article, especially talking about sedition, says that only those words specifically mentioned in the Kedarnath judgment that evoke a public disorder or a chaos against the country and the government established by law will deserve punishment. But if you see the Umar Khalid judgment of Jawaharlal Nehru University, where the person against a revered personality spoke few controversial statements, he was definitely put behind bars. We saw journalists last year like Nikita and Natasha Narwal who were
put behind bars, incarcerated under Unlawful Activities Prevention Act. I, as a law student, often think, why is constructive criticism somewhere not accepted optimistically? It's a privilege to actually mention Chief Justice of India, former Chief Justice, N.V. Ramana, to talk about the colonial era law of sedition to be abolished. And as our revered leader, Shri Rahul V. Karad, always talks about breaking the colonialization, this is the law that we require. Somewhere, media trials often take to the podium to talk about things that are still sub judice in the court. The court abides by the principle of innocent until proven guilty, but not otherwise. Principles of natural justice and definitely the staunch support as well as the trust that people of India vest in the Indian judiciary is where we have to put our Lakshman Rekha. And hence, if Bharat has to be a Vishwa Guru, we have to handle this extremely precariously and know where our limits are for a better tomorrow. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Nandini. I request Honorable Executive President Shri Rahul V. Karad sir to congratulate Nandini. Give her a huge round of applause, my friends. Now, I would request our next student leader, Mr. Sudhanshu Dahake from Madhya Pradesh again to put forward his views. Give a huge round of applause, my friends. मराठी माती महाराष्ट्राला नतमस्तक करतोय. इथे उपस्थित मंचासीन सगळे महानुभाव आणि माझ्या समोर बसलेले भविष्याचे भारताचं भविष्य सगळ्याला माझा आभाळभर नमस्कार. भारत की अखंडता का ही विनाश कर चर्चाओं में है वो, संविधान से उनका नाता सगा. ऐसा लगता है क्या, अरे बोलेंगे और करेंगे शर्मिंदा वो लोकतंत्र को. आखिर साहब बोलने का पैसा लगता है क्या. हाँ, मैं बात कर रहा हूं कई राजनेताओं के धर्म विरोधी बयान की. बात करता हूं कंगना रनौत की, जो अपने आप की तुलना वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से करती है और शहादतों भरी आजादी को भीख बताती है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा है लक्ष्मण रेखा विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूं. भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र असंभव है. विचारों का स्वतंत्र प्रसारण ही इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है. ये आजादी, ये स्वतंत्रता एक नवजात शिशु को भी उतनी है जितने एक निजी संस्थान में कार्यरत किसी अफसर की. ये आजादी, ये स्वतंत्रता किसी गांव के गरीब पुरुष की भी उतनी है जितनी इस देश के सम्माननीय प्रधान पुरुष की. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही परिणाम है जो हम अपने अधिकारों को लेकर सरकारों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं. वो चाहे अनुच्छेद 370 हो या 3 तलाक, सीए, एनपीए हो या एनआरसी, किसान आंदोलन हो या अग्निवीर जैसी कई बड़ी योजनाएं. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोटे बड़े हमले और प्रतिबंधों को झेलते हमारे लोकतंत्र ने कई दशक पार किए. परंतु पिछले 1 दशक से, खासकर जब से सोशल मीडिया की ताकत आम जन को मिली है, इस पर खतरा और अधिक बढ़ गया है. आज ऐसा प्रतीत होता है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं. मुझे तो नागार्जुन की वो बात याद आती है. उन्होंने कहा था, गांधी के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवनदानी निकले तीनों बंदर बापू के. गांधी ने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो. परंतु आज हमारा भारतीय समाज बुरा देख रहा है, बुरा सुन रहा है और इस स्वतंत्रता की आड़ में बुरा बोल रहा है. कितनी विडंबना की बात है कि हम उस गांधी को गलत कहते हैं जिन्होंने आजादी के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो और दांडी यात्रा जैसे कई बड़े बड़े आंदोलन किए. माफ कीजिएगा, ये आजादी तो गलत लगती है जब हम एक तरफ महाराष्ट्र की शान राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने की बात करते हैं, जिनके नौसेना की कमान सिद्धि संभल के हाथों में थी, जिनके तोपखाने की कमान इब्राहिम खान के हाथों में थी, जिनके गुप्तचार मामलों के सचिव मौलाना हैदर अली थे. परंतु दूसरी तरफ विडंबना है कि हम उनके विचारों का उल्लंघन कर इस स्वतंत्रता की आड़ में एक दूसरे के धर्म मजहब को निशाना बनाकर अब शब्दों से नवाजते हैं. हमें समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार अनुच्छेद 19A के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सभी अधिकार दिए गए हैं, ठीक उसी प्रकार 19(2) में उन्हें सीमाओं में भी बांधा गया है.
अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि मत करो माँ भारती को कहने के लिए मजबूर कि मेरी मिट्टी पर झूठा अपनत्व है। अरे मत करो माँ भारती को कहने के लिए मजबूर कि मेरी मिट्टी पर झूठा अपनत्व है। यदि रखनी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिलों में जिंदा तो एक लक्ष्मण रेखा का भी बड़ा महत्व है, एक लक्ष्मण रेखा का भी बड़ा महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। Thank you so much. I would request Honorable Executive President Shri Rahul V. Karaj sir to felicitate Mr. Sudhanshu Dahake. Heartiest congratulations, Mr. Sudhanshu. Now, may I please invite our last student speaker of the session, Ms. Akshita Mansi Madhav Deshpande from Maharashtra. आओ चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने, आओ राष्ट्रहित में चलकर कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मैं अक्षता मानसी माधव देशपांडे कुंभ क्षेत्र नासिक महाराष्ट्र से मंचस्थ मान्यवर एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति का मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र में स्वागत करती हूँ। आज मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लक्ष्मण रेखा का इस विषय पर अपने विचार रखने आई हूँ। अभिव्यक्ति यानी विचारों का प्रकाशन। ये विचार तो मर्याद है, ये विचार मन की लीला है, परंतु इन विचारों पर मर्यादा का होना भी आवश्यक है। इन्हीं विचारों के प्रकाशन हेतु भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था ने अनुच्छेद 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडाइसेस के अनुसार विश्व के केवल 165 देशों ने ही अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। हाँ, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य से बोले तो हमारे लिए केवल अधिकार नहीं, अपितु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता भी है। परंतु आज के इस युग में हमें यह समझना आवश्यक हो गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी सत्य से विद्रोह नहीं। जहां स्वतंत्र पूर्व भारत में हमारे पत्रकारों ने अपनी कलम की तलवारों से हमारे नागरिकों को जागरूक किया, वहीं आज के इस समय में हमारे वही पत्रकार किसी न किसी एक विचारधारा के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। केरला हाई कोर्ट के अनुसार freedom of speech is not licensed to abuse justice system with your half-baked facts and little knowledge about judiciary. अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो गत 7 वर्षों में अभिव्यक्ति के नाम पर देश में हिंसा का प्रसार 500% से बढ़ गया है। मित्रों, हमें रचनात्मक आलोचना और अपमान के बीच का अंतर समझना होगा। We need to understand that freedom of speech comes with responsibility. हाँ, आज हमारे पास अभिव्यक्ति तो है, पर उसकी लक्ष्मण रेखा का है, क्योंकि मर्यादा से परे स्वतंत्रता भी परतंत्रता ही कहलाती है। जब हम लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं तो हमारा ये भारतवर्ष शालीनता, सभ्यता तथा नैतिकता का प्रतीक है। इसी नैतिकता के आधार पर हम सभी भारतीयों को अपने विचारों के प्रकाशन से पूर्व परीक्षण की आवश्यकता है। आज समाज की वो धूर्त विचारधारा जो अभिव्यक्ति की लहराती पताका को धर्म ध्वजा बताकर उसके आड़ में दुष्प्रचार कर रही है, ऐसे प्रवाह से न केवल हमारे भारत को अपितु संपूर्ण विश्व को बचाने के लिए हमें स्वयं लक्ष्मण रेखा बनना होगा। हम सब इस देश के युवा हैं। यह ब्रह्मांड और चीजें सिर्फ सोच सकता है, वो हम कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ, इसी स्वनिर्धार के साथ हमें स्वयं लक्ष्मण रेखा बनना होगा और भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता का रक्षण करना होगा। चलो, आजादी मिलना तो भी थोड़ा सरल था, आजादी मिलना तो भी थोड़ा सरल था, पर उसे निभाना और भी कठिन है। अरे विचारों की अभिव्यक्ति तो यूं ही मिल गई हमें, विचारों की अभिव्यक्ति तो यूं ही मिल गई हमें, पर उसकी लक्ष्मण रेखा हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं। जय हिंद, जय मां भारती। Thank you, Ms. Akshita. I shall request Honorable Executive President Shri Rahul V. Karaj sir to felicitate our last student speaker. Give a huge round of applause for Akshita, my friends. Ladies and gentlemen, I think that should go for a huge round of applause once again for all our student leaders. The zeal and enthusiasm with which they spoke reaffirms our belief that our nation is indeed in safe hands, our future nation is indeed in safe hands. Ladies and gentlemen, today we have the honor and privilege to have amongst us Shri Satish Mahana ji, the Honorable Chairman of the session. He is the Honorable Speaker of Uttar Pradesh Legislative Assembly.
Before requesting Sir to address the gathering, may I please request the technical team to relay a short video on the life and work of Shri Satish Mahana ji. Over to my technical team. Shri Satish Mahana is a member and incumbent speaker of the Uttar Pradesh Legislative Assembly. He has served since the 11th Legislative Assembly and is currently representing Maharajpur constituency of Kanpur. He did his early schooling from St. Joseph's Senior Secondary School and attended the Kanpur University to obtain a Bachelor of Science degree. He participated in the 2009 general elections as a BJP candidate from Kanpur and served as the vice leader of Bharatiya Chhatra Party in the 16th Vidhan Sabha of Uttar Pradesh. Shri Satish Mahana is also a former coordinator of Bajrang Dal, the youth wing of Vishwa Hindu Parishad. Shri Mahana has been MLA for 8 straight terms. He served as Minister of State for Housing and Urban Development from 1997 to 2002. After 2012, he has been representing Maharajpur Assembly, constituency of Kanpur Nagar district of Uttar Pradesh. In 2017, Shri Mahana was appointed as a Minister of Industrial Development in the Uttar Pradesh government. We warmly welcome Shri Satish Mahana. With a huge round of applause, my friends, let us all welcome Shri Satish Mahana ji, Honorable Speaker, Uttar Pradesh Legislative Assembly. Over to you, sir. Thank you very much. I am privileged to be here on this dais. The Bharatiya Chhatra Sansad being organized by MIT, Pune. I am honored to share this dais with the very important dignitaries from across the country. I am happy that Managing Director of MIT, Shri Rahul V. Karad, he has been organizing these seminars for last more than 11 years now. It is the 12th one, I suppose. So when I came to know about MIT after being elected as Speaker of the Assembly, I was very eager to join this. Because most of the times when we are in politics, the perception of the politicians is not very good in the society. People think that those who have been elected by electoral system, पढ़े लिखे नहीं हैं, सारे खराब काम है जो वो लोग करते हैं. लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए हमारे जो यूथ हैं, उनको आज की राजनीति के बारे में बताने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए MIT यूनिवर्सिटी ने एक महत्वपूर्ण पहल करी. इस बात को मैं यहाँ पर MIT के इस महत्वपूर्ण सेशन के ऊपर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे नौजवान छात्रों ने यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, वे टू ड्रॉ द लाइन के बारे में अपने 3-3 मिनट में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रभावी विचार रखे. ये केवल भाषण में नहीं, जीवन में व्यक्ति को उतारने की आवश्यकता है. जिस समय हम चुने हुए प्रतिनिधियों को उनकी योग्यता के अनुरूप पहचानना नहीं चाहते और चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में हम विपरीत बातचीत करते हैं, जैसे कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ भी कहने की किसी को भी छूट हो सकती है, तो मैं इनडायरेक्टली जो हमारे देश के मतदाता हैं, जो देश की बहुसंख्यक मतदाता हैं, उनके बारे में कुछ न कुछ नेगेटिव बोलते हैं कि ये लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जो डिजर्व नहीं करते. तो महत्वपूर्ण काम जो MIT को करना है कि एक समाज में इस परसेप्शन को चेंज करने का प्रयास करना है कि नहीं, समाज में अच्छे लोग भी राजनीति में आ सकते हैं,
We have to maintain the sanctity of the institutions. Some individuals can be good or bad, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और जिस मैं इंस्टीट्यूशंस के सम्मान की बात करता हूं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है जो हमारे संविधान ने हमारे को अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं इस बात को कहूं, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो ये कोई अभी हमारे संविधान ने आज़ादी के बाद ये हमारे को दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आर्टिकल 19 हमारे को इस बात की छूट देता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने रख सकते हैं। लेकिन जब से सिविलाइजेशन हुआ, समय समय के हिसाब से हिस्ट्री में भी हम इस बात को जानकारी रखते हैं कि अपनी बात कहने का अधिकार देने का प्रयास इस सभ्यता के उद्भव भाव से शुरू हुआ। अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो वहां पर भी स्वतंत्रता थी अभिव्यक्ति की। कृष्ण और अर्जुन का संवाद भी इस ओर हमारे को ध्यान दिलाता है। अगर हम उस दौर की बात करते हैं तो जो सभाएं होती थी, सभा का मतलब सभ्य लोगों के बीच की बात करना। आज जिस समय हम सभा की बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि वहाँ पर सभ्य तरीके से बातचीत होगी। सभ्य लोग, पार्लियामेंट्री एंड अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस के ऊपर भी हम उसके दो डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ पार्लियामेंट्री और ये चीज़ अनपार्लियामेंट्री है। तो हमारी बहुत अच्छी बात हमारे एक नौजवान स्पीकर ने यहाँ पर कही कि हमारे को अपने आप से इस बात के लिए तय करना पड़ेगा कि वे टू ड्रॉ द लाइन। केवल आर्टिकल 19 ही ऐसा है जो सिर्फ हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं देता, लेकिन उसमें तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है कि आप इन विषयों के ऊपर आपकी जो स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की वो नहीं है, जो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो ये हमारे को बहुत गंभीरता के साथ सोचना है। ये जो हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, ये इसलिए क्योंकि एक मनुष्य है जो संवेदनशील है, सोशल प्राणी है, और जिस समय सोशल सिस्टम के अंतर्गत हम रहते हैं तो हमारे को मर्यादाओं के अंतर्गत बंधे रहने का एक स्वभाव होना चाहिए। हम जिस समय मर्यादा लांघने की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के उस अवधारणा को लांघने की बात करते हैं जहां पर हमारे को एक रेखा खींचने की आवश्यकता है। जिस समय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाला अम्बेडकर साहब ने संविधान की संरचना करी होगी तो उन्होंने अपनी एक बात में कहा था, उन्होंने कहा संविधान में क्या लिखा है ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज नॉट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉब्लम इज विद इन द माइंड ऑफ मैन। उसकी माइंड सेट व्यक्ति का क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम वहां पर खड़ी होती है। और आज अपनी सुप्रीमेसी को जाहिर करने के लिए हम उस रेखा को लांघने में कोई संकोच नहीं करते, और उसको हम अपनी सुविधा के अनुसार स्वीकार करते हैं। हरवंश राय बच्चन जी ने बहुत 2 लाइनें लिखी थी। उन्होंने कहा कि किसी ने अच्छा और किसी ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। जिसको जितनी ज़रूरत है उतना हमारे को पहचान रहा है। उसको लगता है कि इनकी आलोचना करने में हमारा भला होने वाला है तो हमारी आलोचना कर रहा है। किसी को लग रहा है कि हमारी बढ़ाई करने के लिए उसका भला होने वाला है तो हमारी बढ़ाई। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति ने दूसरे का असेसमेंट करना प्रारंभ कर दिया कि ये अच्छा है कि खराब है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसने करना। जिसे हम बहुत बड़े पर्सपेक्टिव्स के अंतर्गत इसको देखते हैं, राष्ट्र हित में देखते हैं, और केवल राष्ट्र हित की बात नहीं करना चाहता। राष्ट्र हित में व्यक्तिगत जीवन में हम जहाँ कहीं भी संवाद बनाते हैं, हर स्थान के ऊपर वाणी की और भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। क्योंकि एक वाणी है, एक जुबान है जो आपको किसी के साथ मोहब्बत भी करा सकती है, और एक वाणी और एक जुबान है जो आपकी भाषा है वो किसी के साथ आपकी दुश्मनी भी करा सकती है। तो इस बात को बहुत गंभीरता के साथ देखने की आवश्यकता है कि हमारे को किस लिमिट तक बोलने की आवश्यकता है। आज हम अपने कन्वीनियंस के ऊपर, मैंने कहा कि हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मीडिया की जो आजकल इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है,
विशेष रूप से सोशल मीडिया की। यहाँ पर हमारे नौजवान छात्र जो यहाँ से निकलकर प्रदेश, देश और दुनिया का नेतृत्व करेंगे, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में नेगेटिविटी ज़्यादा है। कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा काम करता है तो उसके ऊपर कमेंट करने वाले या उसके ऊपर अपने ओपिनियन देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कोई एक चीज़ नेगेटिव जिस समय आ जाती है तो उसके ऊपर बाढ़ लग जाती है लोगों को कमेंट करने की। यही सबसे खराब है। खराब बात को देखने के लोग ज़्यादा उत्सुक रहते हैं क्योंकि वो आसानी से की जाती है। अच्छा काम मुश्किल से किया जा सकता है। हमारे एक मित्र भी यहाँ पर बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे को उस लिमिट तक पहुँचना लेकिन मुश्किल है। ऊंचाइयों के ऊपर पहुँचने के लिए मुश्किल रास्तों से ही जाना पड़ेगा। भीड़ में चलने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं। मैं इस बात को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। जो अपना रास्ता स्वयं बनाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। भीड़ में चलने वाला कभी अपना रास्ता अलग नहीं बना सकता। आपको अलग अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। अलग जो राष्ट्र हित में हो, अलग जो समाज हित में हो, अलग जो आपके व्यक्तिगत हित में भी हो। और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर आज हम सब लोगों को इस बात के लिए सोचने की आवश्यकता है। मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें आप जब परिवार में बैठे हो, इट इज नॉट ऑलवेज व्हेन यू वांट टू प्रूव दैट यू कैन स्पीक समथिंग, समटाइम्स साइलेंस इज आल्सो मोर इंपॉर्टेंट। आप चुप रहकर भी बहुत सारी बातें कह सकते हैं और चुप रहकर अपनी बात कहने का जो उसमें कला आ जाएगा वो उन सीमाओं को समझ जाएगा, उस लाइन को समझ जाएगा जिसको को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं हो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटे से शब्दों के अंतर्गत कहा गया है कि पहले तोलो फिर बोलो। पहले व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि क्या बोलना है। इस बात को जब आप विचार कर कर बोलोगे तो ये कहते हैं ना कि यूज योर रीजंस फर्स्ट। पहले आप अपने रीजन करिए, किस रीजन के कारण बोले, क्यों आप बोल रहे हैं, बिफोर यू यूज योर टंग। पहले उन रीजंस को ढूंढो कि किस रीजंस के कारण आप बोले। जबान का इस्तेमाल करने से पहले जिस समय आप इस बात के ऊपर विचार करोगे तो आपको वो लक्ष्मण रेखा याद आ जाएगी जिसको लांघने से आप अपना और समाज का नुकसान कर सकते। इस बात को बहुत विस्तार तरीके से इसके ऊपर जितना भी मैंने कहा जाए कम है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो विधानसभा में एक 4 महीने पहले अध्यक्ष के पद के ऊपर चुना गया था, मैं 2 मिनट उसके बारे में भी चर्चा करूंगा क्योंकि समय की सीमा है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए। कौन व्यक्ति कितना साहसी है और कौन व्यक्ति कितना दुस्साहसी है, इसमें फर्क होना चाहिए। फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए। गुण नहीं तो नीम भी नरस में होना चाहिए। और गुण नहीं हो सकती तो नीम भी तो कम से कम ना हो। कड़वी भी बात तो मत कहिए। गुण नहीं तो नीम भी नरस में होना चाहिए। कब, कहां, कैसे, किसे क्या कहना है। कब, कहां, कैसे, किसे क्या कहना है, आपको ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। कम से कम आपके अंतस में, अंतरात्मा में इतना ज्ञान होना चाहिए कि किसको कहां, कब, क्या और क्यों कहना है। और इस बात के ऊपर जिस समय हम विचार करेंगे तो ये जो मूल अवधारणा है डेमोक्रेसी की, जो हमारे को फ्रीडम हमारे संविधान ने दिया, पूरी दुनिया के अंतर्गत हम देखते हैं। जहां पर भी आज 15 तारीख 15 वर्ल्ड फ्रीडम डे भी इसी के आसपास पर मनाया जाता है। तो दुनिया को आज़ादी चाहिए। आज़ादी के लिए नारा लगाना बहुत चीज़ आसान है, लेकिन आज़ादी किस प्रकार की चाहिए। अगर हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश के दीवानों ने, जिन्होंने आज़ादी के लिए ये जानते हुए कि आज़ाद हिंदुस्तान में पता नहीं जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उन्होंने एक आज़ाद हिंदुस्तान की कल्पना की होगी। उस कल्पना को हमारे संविधान में लिपिबद्ध किया गया, जिसके अनुसार हमारे को काम करना चाहिए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष 28 अप्रैल निर्वाचित हुआ था। तो मेरा यह प्रयास रहता है
कि विधानसभा में भी आपसी डिस्कशन हो, डिबेट्स हो। विधानसभा में पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे पास उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, मैं इस बात को यहाँ पर कहते हुए गर्व होता है, आई हैव 18 डॉक्टर्स फ्रॉम मेडिकल फैकल्टी, 200 मेडिकल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं मेरे पास 18। मेरे पास 32 ऐसे लोग हैं जो MBA हैं, MTech हैं, BTech हैं, MCA। हमारे पास 32 ऐसे इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनलिस्ट हैं। हमारे पास 67 लॉ ग्रेजुएट्स हैं। हमारे पास 52 मेंबर्स हैं जो 40 साल से कम हैं। हमारे पास 47 विमेन MLAs हैं। मैंने सबको अलग अलग ग्रुप बनाकर उनसे बातचीत करना प्रारंभ किया। मैं यहाँ पर नौजवान दोस्तों से इस बात के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको, इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स खराब इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर अच्छे लोग नहीं हैं। पॉलिटिक्स को लोग खराब इसलिए कहते हैं कि आप जैसे लोग उसमें आगे नहीं आना चाहते। आपको आगे आना पड़ेगा अगर राजनीति को एक नई दिशा और नई दशा देने का काम करें। आपको आगे आना पड़ेगा। आप जिस समय आगे आओगे, तो जैसे मैंने यहाँ पर खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की असेंबली के बारे में जो एक नेगेटिव परसेप्शन था, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। पूरे देश के बारे में चेंज करना चाहते हैं। और वो चेंज करने की शुरुआत जहाँ से हो सकती है वो MIT पुणे से हो सकती है। मुझे इस बात का विश्वास है। वो यहाँ से उसको शुरुआत करने की आवश्यकता। लोग आए, बताएं। बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हम लोगों ने लगना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस समय इस अमृत महोत्सव की बात करी, इस देश के 75वें आज़ादी के महोत्सव की बात करी, उन्होंने कहा अगले आने वाले 25 वर्ष अमृत काल हैं। 75 वर्षों से आज जो हम मना रहे हैं 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ, जिस समय हम 100वीं वर्षगांठ बनाएंगे, शताब्दी वर्षगांठ बनाएंगे, तो उस समय हमारा हिंदुस्तान कैसा होगा, ये तय करने की जिम्मेवारी मेरे सामने बैठे हुए यहाँ पर नौजवान साथियों की है कि सेंचुरी के बाद जिस समय 100 साल आज़ादी के होंगे, हमारा हिंदुस्तान कैसा होगा। ये आप सब लोगों ने इस काम करने की आवश्यकता। आप सब लोग काम, जिस समय देश आज़ाद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि उस समय हमारे नौजवानों की पसीने की खुशबू उसमें आनी चाहिए कि आप इतना मेहनत आपको करना। अगले आने वाले 25 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। हर नौजवान को इस ओर आगे आना पड़ेगा। आपको आगे आना और उनको आगे की दिशा दिखाने का काम हमारे मित्र भाई राहुल करात साहब करेंगे। मुझे इस बात का विश्वास करेंगे। आपको दिशा देने का काम, दिखाने का काम तो ये करेंगे, लेकिन आगे हमारे को स्वयं बढ़ना पड़ेगा। और जिस समय हम आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान की राजनीति जिसने दुनिया को एक रास्ता दिखाया था, मैं भी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का बहुत एक्टिव मेंबर था और हूँ भी। दुनिया की जिस समय लेजिस्लेशन की बात करें, दुनिया में जिस समय डेमोक्रेसी की बात करें, तो हमारे जैसी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। हमारे को इस बात को बनाकर रखना चाहिए और इस बात को आगे बढ़ाकर ले जाना पड़ेगा। आज इस अवसर के ऊपर मैं विगत since 1991 I contested first time for assembly polls in 1991। अभी मैं बैक टू बैक 8 बार जीता हूँ। ये भी बात मैं इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा कि मैं 8 बार जीता हूँ, वो इन्होंने दिखा दिया अपने मेरे जो एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी उसके ऊपर, दे हैव टूल्ड। और 8 बार जीतने का कारण मेरे द्वारा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया गया काम तो होगा ही। मैं सिर्फ नहीं कह रहा इट वाज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग विच मेड मी विन 8 टाइम्स, लेकिन 8 बार जीतने का कारण सबसे बड़ा ये है कि आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि वे टू ड्रॉ द लाइन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको कहाँ पर क्या बोलना है, किसके लिए क्या बोलना है, इस बात को सीखने का प्रयास मैंने 32 वर्षों के राजनीति में किया है। तो जिस समय हमारे नौजवान साथी सार्वजनिक राजनीति में जाएंगे, उस समय उनको कब, कहाँ, कैसे और क्यों बोलना है, जिस समय इस विचार के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मुझे विश्वास है कि ये जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण लोग हमारे मित्र यहाँ पर आदरणीय कार्तिकेयन साहब बैठे हुए हैं, जो बहुत प्रोमिनेंटली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, हमारे उड़ीसा के माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, सारे लोग जो इस डायस के ऊपर बैठे हैं, सब लोगों का बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। लेकिन मार्गदर्शन लेने के बाद हमारे को समाज में उसके बदलाव में हम कितना वाहक बन सकेंगे, हाउ मच डू वी कैरी फ्रॉम दिस सेशन फॉर ऑल दीज 3 days, आज से शुरू होकर जो परसों तक चलेगा, हम यहाँ से क्या ले जा सकते हैं, उस रोशनी को कितना फैला सकते हैं समाज में, जिसके कारण एक लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बने और लोकतंत्र में बैठे हुए हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास बने
और जिस समय नेतृत्व के प्रति विश्वास बनेगा, उस समय हम निश्चित रूप से हम नए भारत की उस नई रोशनी को जो इस देश की 100वीं आज़ादी के समय में हम कल्पना करते हैं, हम उसको देख सकेंगे। मैं एक बार फिर भाई राहुल जी को, उनके पूज्य पिताजी को, मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय श्री विश्वनाथ जी को मुझे उनके दर्शन करने का अवसर मिला है वहाँ पर। मैं उनके प्रति भी हृदय से आभार करता हूँ और भाई विश्वनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर के ऊपर मुझे यहाँ पर आने का एक अवसर दिया उन्होंने, तो मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश विधानसभा के श्री प्रदीप दुबे जी हैं, हमारे यंग एमएलए डॉक्टर रागिनी भी हैं, जो दे हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ टू पुणे फॉर दिस फंक्शन ओनली, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोगों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस इवेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए जो इसमें सहयोग किया है, आप सबको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में फिर एमआईटी इंस्टीट्यूशंस के सभी बंधुओं को जो इसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को, ऑनरेबल स्पीकर सर को, इफ यू कैन राइज एंड गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन। ही इज वन सच टॉल लीडर, 8 times he became MLA, last 42 years. He is in his public life consistently, 4 decades, 40 years in Uttar Pradesh Assembly. One of the most veteran, qualified, competent leader, and I think he expressed his innocence at this age also, what he expressed. That is the one very important thing, what at least for me, I liked, along with the governance and other issues, what he said. Please give once again a big round of applause to respected. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. It is said that don't work for recognition, but do work worthy of recognition. When a person works for others with full dedication and zeal, they hold a special place in our heart, a place of love, honor, and respect. Ladies and gentlemen, we have come to a very special moment at the 12th edition of the Bharatiya Chhatra Sansad, wherein we shall confer the award of Adarsh Yuva Vidhayak Samman, the Ideal Youth MLA honor, for the best outstanding performance in development work and promotion of parliamentary democracy. The award shall be conferred to Shri Tushar Kanti Behraji. May I please request our Honorable Executive President, Shri Rahul V. Karat sir, and the Honorable Chairman of the session, Shri Satish Mahana ji, to felicitate Shri Tushar Kanti Behraji. With a big round of applause, my friends, let us all witness this moment where the Adarsh Yuva Vidhayak Samman Award is being conferred upon Shri Tushar Kanti Behraji, Honorable Minister of State for Home Affairs, E&IT, Sports and Youth Services, Government of Orissa. Let not the applause stop, my dear friends. It's a historic moment that we are witnessing. Now may I please request sir to address our student leaders. As you, all of you may not be aware, but some of the previous BCS participants, that annually for the promotion of good governance, democracy, leadership, we confer an award on once, such unique MLAs in the country who are qualified, competent, their ethical standards, their overall perception in the society. So he is the IIT graduate and most qualified, committed, honest, first generation leader. Let us give him a big round of applause, and he is expressing his mind. And यही करना है कि आप सब लोग qualified MIT, WPU के, BTech के, MBA के सभी students public life में आके अच्छे law maker बने और समाज का पूरा transformation करे, इस अपेक्षा से ये award हर साल दिया जाता है. मैं honorable मंत्री जी को, जो basically मंत्री बनना है तो basic qualification is MLA ship. So he is a MLA. So that is a very, in his constituency, great work he has done. Please express yourself. Thank you so much, Rahul ji. Honorable
Speaker of Legislative Assembly Uttar Pradesh, Sri Satish Mahana ji, all the distinguished guests on the dais, all the students, faculties and friends from media. At the outset, I would like to thank Bharatiya Chhatra Sansad, MIT World Peace University for conferring this award upon me. I also dedicate this award to all the people of my constituency, that is Kakatpur in Puri district of Odisha, also all the people of Odisha. I would say just 2 words on the Article 21 of Constitution of India. In my opinion, there is no particular line which we can draw just because of protecting our freedom of speech or freedom of expression or liberty. It is subjective, it is contextual, because that differs from person to person. But in legal ambit, I just can say, if we go by the theory of Jeremy Bentham's utilitarianism, then anything we say or express or do that should not hamper the harmony of society or that shouldn't break the social fabric. That I must say that everything should be done in a restricted manner, but that line again is contextual or subjective. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. That should go for a huge round of applause, my friends. His words are indeed inspiring for all our future leaders. Ladies and gentlemen, there are some moments in our life that we wish to treasure throughout. And this being such a moment, we'll just not let it pass by. May I please request all the dignitaries and the student leaders on the dais to please rise in your seats for a group photograph. A moment, a memory that will be etched forever. May I please request all of you to rise in your seats for the group photograph. It's indeed a sight to behold, my friends. Such a memory that will be etched forever in our minds. आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे. Thank you so much. Now, my friends, may I please invite our next eminent speaker, who is the Joint Secretary of All India Congress Committee and National In Charge of Indian Youth Congress, Mr. Advocate Krishna Allavaru ji. But first, I would like to request the technical team to relay a short video on the life and work of Sri Krishna. As the Joint Secretary of the Indian National Congress and the head of the Indian Youth Congress, Advocate Sri Krishna Allavaru is an influential figure. A lawyer by profession, Advocate Sri Krishna Allavaru has a history in student politics, dating back to his time at the University of Delhi. Young people, in his opinion, are the driving force behind societal and political change. He leads Indian Youth Congress on all fronts, whether it be in taking on the government over any issue or launching outreach initiatives in various regions of the nation. Sri Krishna Allavaru, a Georgetown University LLM graduate, lends Indian Youth Congress his logical mind and identifies structural gaps in the policies of the Modi government. He shares the responsibility of drawing the roadmap for the Indian Youth Congress. We warmly welcome Advocate Sri Krishna Allavaru. Give him a huge round of applause, my friends. सबको
नमस्कार, स्वागत और धन्यवाद. Good afternoon, welcome and thank you. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Thank you. So, I can speak in English या मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, जो भी आप चाहें, whatever you prefer. Okay. On popular demand, Hindi? Okay. सबकी इच्छा के अनुसार मैंने अपनी बात भारत माता की जय से शुरू की और आप सब ने इस नारा में दिल और दिमाग के साथ मेरा साथ दिया. हम सब की भावना एक ही है और वो है कि भारत माता को विश्व के सबसे बेहतरीन देश बनाना है. मेरे से पहले आपके दोस्तों ने कुछ बातें रखी. यूपी के ऑनरेबल स्पीकर साहब ने कुछ बातें रखी. उड़ीसा के हमारे मंत्री जी ने भी अपनी बात रखी. आज का जो टॉपिक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वेयर टू ड्रॉ द लाइन, इस पे आने से पहले मैं इस विषय को भारत को दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनाया जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में इस विषय के बारे में बात करना चाहता हूं. दुनिया में अगर हम इतिहास खोल के देखें तो इतिहास के सबसे बड़े आइडिया और इवेंट कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच से ताल्लुकात रखते हैं. देश को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं तो एक दो उदाहरण के साथ मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की भूमिका आपके सामने रखना चाहता हूं. एक जमाना था जब ब्रिटेन पिछड़ा देश हुआ करता था, मगर ब्रिटेन में आइडियाज की आदान प्रदान आसानी से होने के कारण ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी. उस औद्योगिक रेवोल्यूशन के कारण कुछ सालों में ब्रिटेन दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया था. हिंदुस्तान पे कब्जा कर चुका था और यह कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य पर सूरज नहीं डूबता. एक पिछड़े देश से
ऐसा साम्राज्य बनाने में ब्रिटेन में ऐसी क्या हालतें थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ ब्रिटिश में क्यों पैदा हुआ और किसी देश में क्यों नहीं? इसका एक कारण बताया जाता है कि ब्रिटिश राज्य पिछड़ा था, मगर वहां आधुनिक इंडस्ट्री की सोच को आसानी से जगह दी गई थी। बाकी जगह इतनी आसानी से नए आइडिया, नए विचार, नए सोच को जगह नहीं मिली। आज दुनिया का नंबर 1 देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका माना जाता है। इत्तेफाक से वो भी एक लोकतंत्र है और वहां पर भी यूएसए को नंबर 1 बनने में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की ताकत हो, चाहे उनकी विश्वविद्यालय की क्वालिटी की बात हो, इन सब के पीछे एक सबसे बड़ा कारण वहां पर बोलने की, सोचने की, विचारों की, नई आइडियाज की आजादी बताया जाता है। आप दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेस लीजिए, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन लीजिए, इलॉन मस्क, टेस्ला, स्टीव जॉब्स, एप्पल, जेफ बीजोस, अमेज़न, इन सब का सक्सेस के पीछे कारण वहां का सोच, विचार की आजादी, आदान प्रदान में आसानी बताई जाती है। क्या कारण है कि ये तीनों कंपनी चाइना में नहीं हो पाएंगी? हो सकता है कि भविष्य में हो, लेकिन ये तीनों कंपनी के सक्सेस के पीछे का राज उन्होंने नए सोच, नए विचार, नए तकनीक, नए अंदाज से अपना काम करना सीखा। अब दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर की बात करें, स्टेट्समैन की बात करें, उनकी राजनीतिक जीवन, उनकी राजनीतिक सफलता कहीं न कहीं विचार, सोच की आजादी के इर्द गिर्द बनी गई है। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, एब्राहम लिंकन, कहने का मतलब यह है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की पहले मान्यता को ठीक से समझना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिमिट नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी महत्वपूर्ण राइट के लिमिट करने से पहले कैसे करना चाहिए,
कितनी करनी चाहिए, कहां कहां पर करना चाहिए, हमें सोच विचार के करना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आंख में धूल गिरी है तो धूल के निकालने चक्कर में हम कहीं आंख ही ना निकाल बैठे। सीमा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले उसको कैसे हम सुरक्षित रखें, उसको कैसे हम मजबूत बनाएं, साथ साथ उसको कैसे हम बांध के रखें ताकि वो फायदा ज्यादा और नुकसान कम दे, इन तीनों चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सुरक्षित किससे रखनी चाहिए? सुरक्षित बोलने की आजादी को सुरक्षा किससे चाहिए? सुरक्षा ताकतवर शक्तियों से चाहिए जो अपनी ताकत को कायम रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। डीप स्टेट, बड़े बिजनेस, बड़े लीडर, कुछ राजनीतिक संस्था जो अपनी निजी फायदे के लिए आजादी का गला घोटना चाहेंगे, उनसे बचाने की जरूरत है। ताकतवर कैसे बनाने की जरूरत है? हां, हमारा संविधान हर किसी को बोलने की आजादी देता है, मगर हकीकत में जब आप देखोगे तो ये जो संवैधानिक अधिकार है वो लोगों को सामान्य तरीके से नहीं उपलब्ध है। शक्तिशाली को यह अधिकार शक्ति से प्रधान है, कमजोर को कमजोर अधिकार है। हमें इसे बदलना है। कमजोर की बोलने की आजादी को हमें शक्ति देने की जरूरत है। सीमा की बात, कोई भी गलत बोलता है, किसी को भी हानि पहुंचाता है, व्यक्ति हो या देश हो, बोलने की आजादी हमारे पर जिम्मेदारी डालती है। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा अधिकार बनता है कि हम उसको टोकें, रोकें। कभी भी राष्ट्रहित को किसी के बोलने के वजह से हानि पहुंचती है तो वह कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हां, हमें बोलने की आजादी चाहिए, उसको ताकतवर बनाना है, उसको सुरक्षित रखना है, लेकिन साथ में उसको उस तरीके से बांधना है और उतना ही बांधना है जिससे हमें देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में शक्ति मिले। जय हिंद, जय भारत। A huge round of applause, my friends. Those were really amusing words, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for that beautiful address. My friends, since morning we have been discussing about how do we get rid of the mindset that we have been in for more than 150 years. Rahul Karat sir in his address also talked about breaking the colonial mindset and the various activities that we are doing to bring youth out of that mindset and entire country. सर ने उनके भाषण में बात भी की कि हम अभी भी अपने खुद के देश को इंडिया बुलाते हैं, क्यों नहीं हम अपने देश को भारत बुलाते हैं? In the same context, we have prepared a small petition and we need your support to make this a national impact. I request my technical team to kindly relay the presentation. India or Bharat, Independence Day or National Day?
The views of Sri Rahul Karad are very clear about this. Who were the Britishers to give us the independence? Every soul born is independent by itself. Why are we still calling Independence Day? Next, please. 75 years since we broke the shackles of colonialism, but we are still India, not Bharat. Next, please. India to Bharat, Independence Day to National Day. Be the change. We are now going to show you a QR code on the next slide, please. I request everyone sitting here, on the dais, off the dais, please take out your mobile phones, scan this QR code right away. We are going to wait for 60 seconds here. I request everyone on the dais, off the dais, please take out your mobile phones, scan this QR code. If it is not getting scanned, there is a link given. You can manually type this link in your browser, but this QR code should work. Simply go online, scan this QR code, it will take you to a link. There we have put up the petition. We request each one of you to go ahead and sign that petition right away. It takes hardly few seconds, but your few seconds can really change the fate of this country in time to come. I can see mobile phones going up in the sky and trying to scan the QR code, a very, very positive sign. So I request everyone once again, and not just that, I would like to request all of you to click a photograph also. Click a photograph, take it with you back home, show it to your family, friends, and just spread it as much as possible and appeal everyone that we must be known as Bharat and not India. We should not call Independence Day, but National Day. So support this petition, go online and do your best. Thank you. My friends, our country has a tradition of some of the great stalwarts. Our country was known for Vedic Gyan since unknown times. Today we have with us a very special personality, Pujya Shri Indresh Upadhyay Ji, on whom we would be bestowing upon the Yuva Adhyatmik Guru Samman for outstanding contribution in spiritual renaissance of India and promotion of Vasudhaiva Kutumbakam philosophy. A renowned spiritual leader, orator of Srimad Bhagavad Katha and founder of Bhaktipat. Please put your hands together as we felicitate Pujya Shri Indresh Upadhyay Ji. A very special Yuva Adhyatmik Guru Samman. A big round of applause, my friends. This has nothing to do with religion. The message that spread by Pujya Shri Indresh Upadhyay Ji is all about how we should live our lives. I now request Pujya Shri Indresh Upadhyay Ji to say a few words. Yeah. Thank you, Professor Gautam. This particular award we constituted 7 years before. The purpose was very simple, that in public life, so much we see. We all know that, and the very purpose of Bharatiya Chhatra Sansad. And Gokhale Sahab, Mahatma Gandhi Ji, so many people said already that how to unify the Rajniti ka Adhyatmikaran and how to really coin the spirituality and the politics together. The what way long back Swami Vivekananda also said that unification of science and spirituality alone can bring peace to the mankind. And that became the mission of our beloved founder, Dr. Vishwanath Karad sir. And with that purpose, we have bestowed this last 7 years, Honorable Chairman sir, these awards to some young leaders like Maharaj ji. And एक ऐसा भी एक नोशन है समाज के मन में कि आध्यात्म ये थोड़ा 50-55 के बाद जो है थोड़ा हाउस मौज मज़ा मस्ती करो और बाद में थोड़ा 50 के बाद आप सैफरन कलर पहनो या जो भी करना है करो. तो वो बात समझाने की एक छोटी सी कोशिश है ये अवार्ड के माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो भी पूरे भारत से जितने भी अभी स्टूडेंट्स आए हैं इसमें सभी अलग अलग राज्यों से, और राजनीति में इसका जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है ताकि
एक ऑर्डर तैयार हो, जो आपके भी खुद के भाषण से सर बच्चों को एक अलग सा रूप आपने भी यहाँ पे दिया। 70 साल की आपकी उम्र में 40 साल तक राजनीति में रहकर भी जो इनोसेंस, जो प्यूरिटी आपके माइंड एंड हार्ट की यहाँ पे दिखी, वो they are wise enough to understand and sense. So I request Maharaj ji to speak his mind in front of this. There are technocrats, there are some other engineering and basic sciences students. You can express your mind that how it can be clubbed together. Thank you. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आई एम सो ऑनर्ड कि मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया गया। भारतीय छात्र संसद MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से आज युवा आध्यात्मिक गुरु सम्मान प्राप्त करके बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मंच पर विराजमान समस्त गणमान्य सदस्यजन, हमारे युवा भाई बंधु, हमारे यूपी के ऑनरेबल स्पीकर और आप सबके चहेते, और आज जिनको देख के मैं भी बहुत उनका एक प्रकार से मुरीद हो गया, हमारे राहुल जी, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और आप सब लोगों को अपने हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आज परम सौभाग्य मिला कि आप सबके मध्य में आने का अवसर मिला है। आज का टॉपिक जिस पर सारे हमारे युवा भाई बहनों ने भी अपने भाव प्रकट किए, गणमान्य अतिथियों ने भी अपने भाव प्रकट किए, मेरा भी मन का भाव था कि मैं कुछ कहूं यदि मुझे अनुमति प्राप्त होगी तो। और क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अब आध्यात्मिक गुरु हूं तो फिर अपने भाव उसी रूप में ही प्रकट करूंगा, तो इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा और जो भी कहूँ उसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। जीवन में सुधरना कैसे है सब बताते हैं, जीवन में सद्मार्ग पर कैसे चलना है ये सब बताते हैं, लेकिन हम लोग बिगड़ किस वजह से जाते हैं ये कोई नहीं बताता। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कई सारे शास्त्र हैं, उनमें से एक है पंचतंत्र। और पंचतंत्र में बताते हैं कि यदि युवा संभलना चाहता है, युवा बचना चाहता है, युवा अपने पद से भ्रष्ट नहीं होना चाहता, तो उसको 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ जितने भी युवा हैं सब भविष्य हैं हमारे भारत का। मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, मैं भी भविष्य हूँ। 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और वो 4 चीज़ कौन कौन सी हैं? यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम अविवेकिना, एकैकम्प्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। 4 बात। सबसे पहला, युवावस्था, यहीं पर बिगड़ोगे, यहीं पर संभलोगे। दूसरी बात, युवावस्था में भी बहुत धनवान हो जाना। तीसरी बात, प्रभुत्व। प्रभुत्व मतलब बहुत अधिकार मिल जाना। युवावस्था का होना, धनवान होना और बहुत से अधिकार प्राप्त हो जाना, ये 3 चीज का साथ होना। और चौथी बात, अविवेक का होना, विवेक ना होना।
ये 4 चीज जिसके अंदर हो जाती हैं वो अपने स्थिति से गिरेगा, उसका नाश निश्चित है। बल्कि पंचतंत्र तो कहता है इनमें से एक भी चीज है और विवेक नहीं है। आप युवा हो लेकिन विवेक नहीं है, आप धनवान हो लेकिन विवेक नहीं है, आप प्रभुत्व है, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं लेकिन विवेक नहीं है, तो आप निश्चित ही अपने पद से भ्रष्ट हो जाओगे। लेकिन यहाँ बैठे इतने सारे लोग हैं, सब अपने आप झांक करके देखो, हम सब पे ये चारों चीजें हैं। हम युवा भी हैं, हम धनवान भी हैं, हमको अधिकार भी प्राप्त हैं, लेकिन चौथी चीज बहुत जरूरी है, हम विवेकी हैं कि नहीं। विवेक का मतलब क्या है? सद असद का ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना। अभी हमारे राहुल जी कह रहे थे कि एक सोच बन गई है कि आध्यात्मिक होना या कथाएं श्रवण करना, मंदिर जाना, ये सब 50 के बाद में हम लोग करते हैं। एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, 50-55 के बाद में की गई भक्ति या किया गया आध्यात्म ठीक उस प्रकार है जैसे घर में आग लग जाए और आप उस आग को बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हो। जब तक कुआं खुदेगा, पानी का स्रोत आएगा, जल करके घर जल करके नाश हो जाएगा। इसलिए भक्ति 55 का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय है। आध्यात्म 55 का विषय नहीं, आध्यात्म बचपन का विषय। और उसमें भी आप लोग जिस जगह रहते हो, महाराष्ट्र, श्री ज्ञानदेव की भूमि, श्री नामदेव जी की भूमि, श्री तुकाराम जी की भूमि, सबने बाल अवस्था से ही आध्यात्म को जीवन में ला करके और जीवन की कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। आध्यात्म एक औषधि की तरह है, उसको जीवन में लाइए, वो जीवन में ना जाने कितने प्रकार के पतन होने वाले स्थानों से आपको बचाएगा। इसलिए उसको जीवन में लाना बहुत जरूरी है। मैं भी एक बहुत छोटी अवस्था से कथाएं कर रहा हूं, परंतु जीवन में सदा एक प्रसन्नता, एक आनंद, एक खुशी का अनुभव करता हूं। इसलिए जितने भी हमारे युवा हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हों, आध्यात्म को अपने जीवन में एक स्थान दो। और मुझे बहुत खुशी है कि MIT यूनिवर्सिटी और हमारे राहुल जी, उनके पूज्य पिताजी, वे इस चीज पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि आध्यात्म को साथ लेकर के युवाओं को उनके जो एम्स हैं उनकी ओर उनको अग्रसित किया जाए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मुझे यहाँ बुलाया गया। अब समय कम है, सब लोगों को भी समय देना है, परंतु अपना भाव विराम दूं उससे पहले हमारे श्री नरसिंह मेहता जी एक बात कहते थे जिसको श्री गांधी जी ने कोट किया, और गांधी जी ने उसी बात को कहकर के विश्व में एक अलग जगाई। श्री नरसिंह मेहता जी कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीर पराई जाने रे। जो चीज आपको अपने लिए अच्छी नहीं लगती है वो किसी के साथ मत करो। यही आध्यात्म है, यही धर्म है। इन्हीं भावों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों का, MIT यूनिवर्सिटी का और इस भारतीय छात्र संसद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मुझे सम्मान के लिए बुलाया। एक बार आपके श्री पंडरीनाथ भगवान के यहाँ का एक जय जयकार है, वो कर लीजिए। पुंडलीक वरदे श्री हरि विठल
ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। Now, my friends, I would like to invite retired IPS, former Director of Central Bureau of Investigation, former Director General of National Human Rights Commission, and former Special Director General of Central Reserve Police Force, Shri D.R. Karthikeyan ji. Sir will be enunciating about mantras for youth to tackle challenges of democracy and lead the life and the nation. But let's first see a short film about the life and work of Shri R.D. Karthikeyan ji. Shri D.R. Karthikeyan is a person of numerous hues. He rose from a humble farmer to become a human rights activist, a lawyer, senior police officer, proponent of interfaith harmony, and an environmentalist. He held a number of high-ranking roles in the Indian government, including Special Director General of the Central Reserve Police Force, Director of the Central Bureau of Investigation, and Director General of the National Human Rights Commission. In addition to speaking at conferences on a variety of topics related to human welfare, including combating violence, crime and terrorism, and advancing the environment, human rights and interfaith harmony, he has traveled to various countries. He received the Padma Shri Award in 2010 in recognition of his meritorious efforts, which were acknowledged by the Indian government. Dr. Karthikeyan has also been awarded the Medal for Distinguished Service by the President of India. Additionally, he was recognized as an eminent personality of Karnataka state at a public event in Bangalore. He currently works with a number of groups that support environmental protection, clean and renewable energy, health for all, welfare of farmers and rural residents, and spirituality. He has edited and written numerous books and articles on a range of topics. We warmly welcome Dr. D.R. Karthikeyan. I kindly request you to address the gathering, sir. A huge round of applause for Shri D.R. Karthikeyan ji. Namaskar. Good afternoon, good evening, all the wonderful audience. My regards to the Honorable Chief Guest of the evening, eminent speakers, and dedicated faculty, and my young friends from all over the country. Let me first pay my gratitude and compliments to Dr. Vishwanath Kararji, Dr. Mashalkar, Dr. Rahul Karad, and their wonderful team for organizing this unique event, unparalleled. The arrangements have been perfect. The invitations have been extended well ahead of time. I wrote to Dr. Mashalkar, it's a unique organization. Already you are all in the leadership. Excel. Now the theme given to me is Mantras for Youth to tackle challenges of democracy and lead the life and the nation. The mantras are secrets for the youth, and in fact for every one of us are the same values, not only for dealing with enormous challenges facing democracy, but also ever-increasing challenges and problems facing the life of every one of us, the nation, and the entire planet. These are very well known to each one of us, but are worth being repeated again and again. And we heard most of these subjects covered beautifully by the bright student leaders and other eminent speakers since this morning. Of course, we can discuss the obvious mantras like integrity, devotion, dedication, hard work, patriotism, environment, leadership,
and also the courage, power of independence. All of them are important to the youth for facing challenges to the individual, the family, the society, the planet Earth, and rule of law, human rights on many fronts. All that would take years and weeks together, hours and weeks together. So let me focus few minutes given to me on some aspects which in my opinion are the most important. The young lady Visakha and Kastub Yadav, who took care of me since my arrival, they said I should focus on values. And this at lunch break, Dr. Vishwanath, the unique personality who created this institution, said she must share something about your personal life also. Okay, if that go, I can speak briefly about the value of courage, independence. You know, the assassination of Rajiv Gandhi took place on 21st May 1991. The government of India requested me to take up the investigation. I was in Hyderabad. At that time, those in Delhi declined to take up because it is hard to detect. And if you don't detect, you will be condemned as incompetent. If you detect the deadly terrorist group will not allow you and the family to live. I accepted it as duty to the nation. At that time, it was considered impossible. It was destined to remain a mystery like Kennedy assassination. When we took it up, we found it was the deadliest terrorist group at that time. They killed their own president, defense minister, any number of police officers who took any case against them. But I detected the case, charge sheeted them. It's all part of history. I was very closely associated with Mr. T.N. Seshan, who has been also played a very important part in this institution of government. Then they asked me, you know, they have killed their own president. Hundreds of police officers, defense officers. Are you not scared? And also, you know, politics of this country. I said, no, I am not obliged to anybody and I don't fear death. Every born has to go one day. Even in the part of doing your duty, you get killed, it's all right. I said, no fear, courage, and also independence. I am not obliged to anybody. Till then, also in future. In fact, when Dr. Kalam offered me governorship, ambassadorship, I thanked him, no sir, I have done my duty. There is no compensation for that. So one more thing, I am going to focus on health of the body. For that also, I must tell you a story, an actual incident. It was about my meeting with Honorable Sri Narendra Modi ji when he was Chief Minister of Gujarat. 20th June 2013, I met him at Gandhinagar in his new office, Chief Minister's office. I have been already the chairman of the ambulance service, Gujarat State Ambulance Service. And that connection, I used to meet him every 3 months. We run 15,000 ambulances. It's the largest ambulance service in the world. We save about 1,000 lives a day. 100 to 150 children are born in the moving vehicles, so efficiently done. This is a favorite project of Chief Minister Narendra Modi. So when I met him, a month before he became the Prime Minister of India, I met him in his new office. He said, that is my favorite subject, the only thing we do for the poor. Anybody rings up 108, your people go and save them. So then I asked him a question. Sir, your Chief Minister job is a full-time job and you are a man of perfection. Where will you find the time to discharge the duties of the Chief Minister of Gujarat, at the same time campaigning for the Prime Ministership of India, traveling all over the country? India is not a country, it's a continent. Where will you find the time and energy? Please listen to this. He told me, Karthikeyan, I get up at 5 o'clock in the morning. I am telling this for young friends. Narendra Modi ji told me in 2013, he said, I get up at 5 o'clock in the morning, 90 minutes of yoga, pranayama, meditation. Without that, I don't start the day. So I don't know what fatigue is.
He said, you come at 10 o'clock in the night, you will see me here, or in the home office, or in the districts. So, when I go to a management institute, they say, where is the time for us to do yoga and meditation? I said, are you busier than Narendra Modi ji? And I want to tell you, even today, he does it 2 hours a day when he is in Delhi. I know very well. The busiest man in the world, perhaps, not only in the country, if he can, he said, because of that, he said, I don't know what fatigue is. You see the enormous energy with which he is moving around all over the world, right? And you see him always calm, cool. Wow, how many challenges in this country? Every day, 2 hours a day. If the busiest man in the world, like Narendra Modi ji, can spend 2 hours for his body, for yoga, meditation and pranayama, now tell me, ladies and gentlemen, how can any of us say we are too busy? So that is the point I want to talk to you. So, health is our basic right. So as everything else has been covered by others, I want to tell you fundamental duty and fundamental right. When health is lost, everything is lost. The Creator, the Divine, the nature, by whatever name you may believe, He has created us in perfect health, and everything in the cosmos, everything going on, millions of planets going on, all in order. That nature is perfect. Why is it we are not healthy? Because of our own wrong lifestyle. So otherwise we are destined to lead a healthy, robust life till the very end of our life on the planet. No doubt our longevity has increased, but do we also live a healthy, happy, peaceful life? While science and technology have given us more comforts and facilities, individuals experience constant stress of the individual, family, society. Society is in disharmony. The countries are in war with each other. Planet Earth is facing unprecedented environmental crisis. Mother Earth is crying for relief. Why do we face decreasing challenges to our physical health, mental health, emotional health, spiritual health, and the health of the planet? Here, an organization like this, where science and spirituality go together. So here you are taught about spiritualistic science and scientific spirituality, and tell you. So WHO says health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely absence of disease. You must add also spiritual wellness, emotional wellness, social wellness, cultural wellness, and all that. So I want to only tell you, please focus your time and energy on your health. Health is, if you are healthy, you can achieve anything. If you are not healthy, you become a liability to the family, to the nation, to institution. You see the dynamic people running around. I've been watching it here. So much of energy because they also, Dr. Vishwanath Karat, Mr. Rahul Karat, where do they get all this energy? Because of spirituality. They believe in spirituality, yoga, meditation, and all that. All I want to tell you, there is a lot to be shared with you, but I want to take, there's no time to all that. I will only say this. Also acceptance. Acceptance life as it is. And also gratitude. Be grateful too. If you count the blessings, there are so many things you have to be grateful. And don't blame game. We create our own hell or heaven. I can be happy if I follow certain right way of living, right food. I would strongly advise you plant-based diet. You will see, unless the world changes to plant-based diet, the globe, you cannot save the planet from destruction. Global warming, glaciers are melting, seawater level is rising, all the coastal cities are going to be flooded. All the new pandemics are coming because our leading a selfish life, over-exploitation and all that. Gentlemen, my only appeal to you is, please spend at least an hour every morning or evening for your physical health, mental health, spiritual health. Yoga, meditation are the best way. These are the technology given by ancestors. The whole world is accepting it today now. Thank you very much. Namaskar. Thank you very much, sir. A big round of applause, my friends. Thank you very much, sir, for your words of wisdom. And now it's time for the most important questions and answers, for which I would like to request all the dignitaries to please come forward. I request Shri Satish Mahana ji, Dr. K. Karthikeyan ji, and Advocate Krishna Allavaru ji to kindly come forward on the mic
This mic, please. Okay, my friends, this is the most important part of Bharatiya Chhatra Sansad, and I would say most important feature of Bharatiya Chhatra Sansad. I would like to share with all the dignitaries, those who are standing on mic. Sir, the question would come to you. You would be able to see the student on the screen, which is on the left-hand side or right-hand side. You will see the student on the screen. The student is asking you question live from those podiums, which you see on our left and right hand side. Okay? But it's practically not possible to see. That's why we have arranged these screens for you. I would like to request all the students, those who are asking questions, and I would like to request all the dignitaries, those who are answering, both to please be crisp and precise so that I can take as many questions as possible. So I will try to take maximum questions only if you help me with chota sawal, chota jawab. Thank you very much. The first question is coming from podium number 1, Aryaman. Aryaman, just tell us your state and your question, please. I'm from Maharashtra. Okay, your question, please. To what extent should the government accept criticism before acting using the sedition law? Your question is for? My question is for the speaker from Tamil Nadu, Okay. Ms. Nandini. I think, no. Okay, the question is, to what extent should criticism be accepted by the government before using the sedition law? Anyone from the stage, please? I think Karthikeyan sir would be able to answer it much better. Yeah. Mike. Yes. You know, as they say, I have the freedom to walk with my walking stick. But the liberty is, it should not hit the man behind me or by the side. To that extent, you've got the liberty. As long as it doesn't hurt anybody's feelings or national interest, yes, you can do it. But your speech should not go to the extent of hurting anyone's feeling, religion, caste, or it amounts to anti-national, provoking ill feelings against the community or the country. It's allowed. Beyond that, yet it has to be treated as unlawful and they should be prosecuted. Freedom is not uncontrolled license. It's not a free license. Freedom is, you can express as long as it doesn't affect others. Okay? Yes, sir. I think the next question is coming to us again from podium number 1 from B. Sahithi. Are you there? Yes. Please go ahead. Just share your state, your question, and your question is for whom? Go ahead. It's working. No, it is working. We can hear you. You are from Hyderabad. Go ahead. And my question is, even if we have freedom of speech or even if we are crossing or not crossing the Lakshmana Rekha, people will be judging us. So there will be a fear for the people that these many people are not judging us. So how will you convince them? What is the solution? Got it. And I think your question is to Satish, sir. It is for all the dignitaries on the stage. Yeah, okay. Can you repeat the question, please? It was not The clear. question is, even if, yeah, that is actually sensitive. If you touch it, it will. Hello? Yeah, the question is, even if we have freedom of speech or if we are crossing or not crossing the Lakshman Rekha, people will keep judging us. How to deal with it? That is why we have laws and judiciary. Any man with a common sense will know what is right, what is wrong, and we also have got fundamental duties. Our constitution is fundamental rights, all right, but it's also fundamental duties to prevent these irresponsible speeches. Yes, sir, please.
People will judge your concerns when you are talking about the freedom of speech, whether this is right or wrong. As I said in my speech, that people want to hear what they want to listen to, what is in their personal interest. And when I talk about the patriotism of the nation and the states also, so people are more concerned about what you are saying, which reflects your thoughts towards the state and towards the nation also. So if you are speaking anything in the interest of the nation, I think that people will judge you positively. And if you are talking about self-interest, right, then people may think that you are talking about self-interest and they may judge you in wrong manner. Right. So whenever you speak, you will have to speak in the interest of the society, in the interest of the nation, I think. True, true. Thank you very much, sir. Anybody else who would like to share? Okay, thank you. The next question is coming to us from podium number 3. Aditi Sharma would like to ask the question. Aditi, are you there? Yes, sir. Aditi, your state, your question, please. Am I audible? Yes, loud and clear. Go ahead. I'm from Uttar Pradesh, and my question as a youth is, our constitution is guaranteed freedom of speech and expression since its establishment. As per the World Press Freedom Index published in this Tuesday, India slided down to 158th position from 150th position from the 142nd position out of the 180 countries in the world. So what are the necessary reasons for that? Okay, I think this question applies to all the dignitaries. I would like to request all of you to please answer quickly in short. Who are sitting in judgment? Yeah, that is important. Who are sitting in judgment? Who decide this? In those countries, are they allowing any type of speech to be made? I don't think you should give too much importance to these type of rankings. There is a lot of people prejudice against us. It depends upon the world media also. They are highlighting anything going wrong anywhere, but these type of things are there everywhere. You know, we have to be responsible. We are confident enough, responsible enough. What is right, and we have got an excellent rule of law. We believe in rule of law. We have got an independent judiciary. True. And I think they intervene in time and give all the proper intervention. True. Parliament is there, discussions take place, and we have to accept our own judgments. Supreme Court is the final authority. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you very much. Anybody else would like to add? Yes. The question is, the Constitution allows us and guarantees freedom of speech in India. But still, we slided down from 142nd to 150th position recently in rankings, even if we have freedom of speech. Can you please guide us with the reasons and what we should do? Actually, the perception, what I told is a bit. This perception, we all have to change it actually. Most of the times when we are talking about the public representative, public system, so we don't rely on that because we are finding aloof from that system. We find something we are left out. So we will have to get involved into the system. Then also we'll come to what the actualities are. When we really come to know what actually is, then only we'll be in a position to say that we are on the right track. So we all have to be part of the system where we may rank much more higher. And as Honorable Sir has said, who are the people to judge? True. So anybody come and judging it and giving their own views and statements, that does not matter so much. True. Thank you very much. The last question is coming to us from Sarthak Chaudhary. Are you there? You want to share? Please go ahead, sir. So I'm from Maharashtra. Hold on for a moment. So you can come here if it's not working. Hi, I think the question is that on some particular ranking, we have dropped down the index. What could be possible reasons for this? I'm not going to comment on the accuracy of that report because I do not know the report and I do not know what's behind it. But typically, the parameters that they look at is how strong, independent, unbiased the media is,
how active the institutions are, which is supposed to protect that particular right or set of rights. And in general, how do the people in the country feel about it? So I'm assuming that that particular index, whether they have measured it rightly or wrongly, I'm not here to comment. True. But I'm assuming that on these parameters, they felt we slipped. Thank you very much. But still, we have one more question coming from Sarthak Chaudhary. Are you there, Sarthak, at podium number 3? Yes, sir. Please go ahead. So I'm from Maharashtra. My question is for the learned advocate, Krishna Allavaru ji. In the backdrop of Shriya Singhal versus Union of India judgment, can executive once again attempt to limit freedom of expression? Yeah. So We didn't follow the question. yeah, the limited part that I got is that in the context of a judgment, can the executive once again limit freedom of expression? Did I get that question right? Yes, sir. Yeah. So I honestly believe that in the context of that judgment, or even beyond it, the executive, the judiciary, and the other institutions are definitely justifiably within their rights, as Karthikeyan ji explained, to draw limits to this fundamental right if there is a real and imminent danger of any violence, harm, or compromising of national security, among a list of other limitations. So I wouldn't say that any of these institutions are bound by what a precedent says, but there is enough that the Constitution says when, how, to what extent they can limit and should limit this right. Thank you very much, sir. The last question coming up to us from podium number 1, Sushant Patil. Are you there, Sushant? Yes, your state and your question. Sir, I can see your question is really long, Sushant. Please make it crisp. Thank you. Sir, I want to ask this question to Karthikeyan ji, sir. Please go ahead. Sir, recently Parliament declared some of the common words as unparliamentary, like corruption and dictator. Sir, is it correct to declare it? Like, isn't it a typical line drawn for the freedom of speech? Got your question. Sir. It's a question of judgment, depending upon the time, where, how made, and is it likely to give justification for violence or riots. This country, unlike many other countries, we have numerous religions, numerous castes, all living together. We are not a country with only one religion or one caste or something like many other countries. So we have to take care of the sensibilities of all institutions, major and minor religions, castes, all that, we have to respond. True. If any of our observation is going to cause insult or provocation to some groups to indulge in counter-violence or talk, we have to put it down. Because freedom doesn't mean license. Freedom of expression, up to the extent you can express your views, but without hurting others, without hurting the sentiments of other castes, communities or religions. We have got, since this is the important, I know very well, I've been in the district, I've been the Commissioner of Police and all that. Depending upon suppose in a major religious festival, somebody said, there'll be huge procession, it can provoke them into violence. Right. We have to safeguard the public order is the primary duty of the government. Public order. Anything against the public order has to be put down. And against it, you can always go to the freedom of press is there, freedom
you can rule of law. Courts are there. Courts intervene very effectively. We have seen in recent times, the Supreme Court has intervened and said no, the action taken by the government or the policy is not correct. So you have got remedies. Yes. Yeah, thank you. Thank you. Yes, sir. Please. This was very important questions asked by one of my friends. And I would like to remind him that there was a news in the national media and simultaneously print and electronic media that these words have been said unparliamentary by the parliament. These have been declared unparliamentary. But I would like to remind you, on the other hand, the next Honorable Speaker of Lok Sabha and the Lok Sabha Secretariat also specifically said that this has not been given by the Parliament or any of the offices which say that these words were unparliamentary. There were pre-incidents for the last few years when some or the other ways these words were sponged from the proceedings of the House. It is not what you say, it is not how you say and when you say. अब जिस समय हम कोई बात कहते हैं कि बाप कहना भी तो पिता को ही बाप कहना है, तो कहते हैं तुम्हारा बाप कैसा है, तो उस बात को अगर उस समय पार्लियामेंट ने देखा कि ये इस समय यहाँ पर इसको स्पंज करना है, तो उन्होंने कहा ये दिस इज नॉट द राइट वे. आप कहोगे बाप पिता को बाप कहेंगे कि उनके भी तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, उस दोनों बातों में फर्क होता है. तो लोकसभा हैज नेवर सेड, बिकॉज आई बीइंग ऑन दिस स्टेज, व्हेन आई एम कोटिंग ऑनरेबल Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji, he himself had a press briefing on the next day giving clearance and stating that these type of words have never been said by the Parliament or the Parliament Secretariat, that these cannot be used in Parliament. So you must, whenever you ask the questions, you must be clear, I said, that what has been said. And after also, the following statement, what has been given by the Honorable Speaker, you must know that also. Thank you very much. Thank you, dignitaries. I request you to kindly accept the chairs. Thank you very much for your participation in question and answer round. And dear students, now it is time for the most important part in this Sansad. All you parliamentarians are now requested to take out your mobile phones, including the dignitaries on the dais. We are now going to have the voting on resolution. I would like to request my technical team to display the resolution. I'm going to explain how this resolution would be voted upon. You can see a big QR code. You're requested to scan this QR code. It will automatically open in your browser, and a web page will open on which you will be able to vote. If this QR code doesn't get scanned, then you can log on. You can see in the right-hand side top corner, you can log on into live.voxvote.com and simply enter the PIN number as 55150. You will be able to land on the same resolution page as the QR code. You don't have to do both. It is a or, so you can scan the QR code. If it doesn't work, then you go for logging on to the website. Now let us see the resolution. We, the participants of the 12th Bharatiya Chhatra Sansad, affirm that national unity and integrity, social harmony and individual dignity constitute the Lakshman Rekha of the freedom of speech. We pledge to adhere to this line with exercising the freedom of speech. हम 12वीं भारतीय छात्र संसद के सहभागी यह पुष्टि करते हैं कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सामाजिक सद्भाव और व्यक्तिगत गरिमा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लक्ष्मण रेखा का गठन करती है. हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए इसका पालन करने का संकल्प लेते हैं. My friends, your time has started. We will take only 60 seconds to come up with the results. I request you to quickly complete the procedure. आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल
कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से। Thank you. I think we are now good to go ahead with the results. I request my technical team to process the result and take us. Okay, the resolution passes with 98.7% votes. A big round of applause, my friends. It's a huge, I can even say absolute majority. Thank you very much for your wholehearted participation. My friends, with this, I would now like to request and invite the Registrar of MIT World Peace University, Dr. Prashant Dave, to propose vote of thanks. Good afternoon to all. I stand before you to propose the vote of thanks on behalf of Dr. Vishwanath Karad, MIT World Peace University, and 12th Bharatiya Chhatra Sansad. First of all, I would like to extend my warm gratitude to the student leaders who presented their thoughts to the entire gathering present over here. Ms. Aditi Dwivedi, Pratap Raj Tiwari, Nandini Ravi Shankar, Sudhanshu Dahake, and Akshata Manshi Deshpande. Their views and their expression of thoughts are really reverberating, and we expect our student leaders to come forward and express their views in the same manner with the same zeal to motivate other students as well. I extend my warm gratitude to the chairman of the session, Sri Satish Mahana sir, Honorable Speaker, Uttar Pradesh Legislative Assembly. I extend my gratitude to Sri D.R. Karthikeyan ji and Advocate Krishna Allavaru ji. Thank you, sir, very much. Thank you very much, sir, for being present over here. We extend our congratulations and greetings to the award winners upon conferment of Adarsh Yuva Vidhayak Samman to Sri Tushar Kanti Behra, sir, and conferment of Yuva Adhyatmik Guru Samman to Pujya Sri Indresh Upadhyay ji. Sir, it's an honor you accepted our greetings and our congratulations. We are really overwhelmed to know that you have accepted the awards that has been conferred upon you. Thank you very much for acceptance. I extend wholehearted greetings and I extend wholehearted gratitude to all the student ambassadors who have wholeheartedly put in a great show. A warm greetings to all the student ambassadors. I extend wholehearted greetings and gratitude to the students. Last but not the least, many staff members, our faculty members behind the curtains, they have worked and toiled hard to make this event a great success. And all the students who have raised questions from different dais, I congratulate all of them and thank all of them to come up and raise their questions. I thank the entire panel of this session to answer very patiently. Thank you very much, sir. We look forward to your guidance in future as well. Finally, a sense of gratitude and expression of gratitude to Rahul Karad sir and Dr. Vishwanath Karad sir for giving us this platform and opportunity to discuss on this particular topic, freedom of speech, where to draw the line. Thank you all. Thank you very much, Registrar sir. Thank you very much for proposing vote of thanks. My friends, tomorrow is going to be the most exciting, I would say, I can say this for every day, but tomorrow is going to be a very, very special day for all of us. Tomorrow in the session 2,
dynasty, the untold truth of every political party, and the conferment of Ideal Legislative Assembly Speaker Award on Dr. C.P. Joshi ji, Honorable Speaker of Rajasthan Legislative Assembly, we would be able to witness. We will have Dr. Meera Kumar ji in the session. We will have Shri Shivraj Singh Patil ji. We will have Suresh Kumar Khanna ji, Hiralal Alvaji in session 3. We will have Ragini Sonkar, Supriya Shinonate. We will have Bhagyashri Lekami, Kulvinder Bagha. We will also have in session 3 Simran Khan, then Sanjay Singh ji, Shri N. Gopala Swami ji, IAS retired Padma Bhushan, Chancellor of National Sanskrit University. We will have Shri Vijay Kumar Sinha ji. We will also have Shri Mohammad Harun Rashid ji, Divya Mahipal Mandran ji, Praveen Pathak ji. So tomorrow we will also witness Prahlad Kakkad ji and Abhinav Mohanty ji. We will also have the presence of Ravi Rai, Akhila Yadav and many, many, many more. My friends, tomorrow's session will start sharp at 8:45 a.m. So all are requested to be seated from 8:30 a.m. sharp tomorrow morning. Now we will have the Youth to Youth Connect session. The Bharatiya Chhatra Sansad respects its participants' urge to contribute in the process of nation building. Bharatiya Chhatra Sansad also recognizes the fervor and commitment of the young student leaders like you to undertake the action projects which would help society and help you evolve as a leader. Answering to your call for this great purpose, this year we have introduced a new dimension to Bharatiya Chhatra Sansad, which will be known as BCS Youth to Youth Connect. A new dimension to Bharatiya Chhatra Sansad, which will be known from this year. This innovative concept is a brainchild of Sri Rahul Karad, founder convener of BCS. This idea is students are interested to similar action areas to develop and to come together under the banner of BCS Youth to Youth Connect and develop the action plan for 1 year. Subsequently, they will implement this action plan in their city, region or state. In this way, BCS Youth to Youth Connect program will drive the participants from inspiration to action. You all have registered for this special program. I think in the last session we showed you the QR codes. For this special program, now you all are required to go to the respective venues allotted to you for your action area. Each participant will be presenting his or her thoughts and actions on the chosen action area in the hall or designated classroom. Tomorrow, in this very Pendal, Swami Vivekananda Sabha Mandap, we will start our session at 8:45 a.m. sharp. You all are requested to be seated by 8:30 a.m. Thank you. आओ अब कुछ बात करेंगे. Dear student participants, you can see the list of halls or rooms where the topics of Youth to Youth Connect are going to be conducted. There are 10 different topics. Topic number 1 to topic number 8, they are going to be conducted in Chanakya building behind this stage. And then last two topics, topic number 9 and topic number 10, they are going to be conducted here only in this pandal. For registering to the topic, you just need to scan the QR code so that you get registered to the topic of your interest. You can even directly reach out to the venue mentioned for that particular topic, and going there you can register for that topic. I request the technical team to please display the venue arrangement for Youth to Youth Connect. Thank you. मिलजुल कर अब काम करेंगे. आओ अब कुछ बात करेंगे. मिलजुल कर अब काम करेंगे. तब जाकर कुछ बात बनेगी. जनहित की शुरुआत बनेगी.